Good afternoon, everybody. Hi, Chen. Can we Good just do afternoon. Am I audible? sound and audio check, sound and video check, please? Chen, could you say something, please? Is the frame okay? Yes. Good afternoon, everybody. Good afternoon, Shilpi. Hi, Sital. Good to see you here. सबको नमस्कार. हम कुछ ही देर में शुरू करने वाले हैं. हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारे पैनलिस्ट्स के लिए और कुछ और मेहमानों को जोड़ने के लिए. आप प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू. Good afternoon, everyone. Oh, let's wait for some time. We are yet to be joined by some other participants again. Let's wait for some time. नमस्कार संतोष जी. अच्छा लगा आपको यहाँ देख के. Hi, ma'am. Sabe, papa, não dunia mata linda. Sono on mama. और डिपोज अच्छे लगे. Yeah, Pira, you are audible. Pira, apni hunya se. Ita khali Yes. mute kuna rakhi. Mute na. Yes. For some Yeah. time, we'll keep mute. We'll tell you when Okay, to. okay. Ne? Right. Hi, Santosh. Right. Thank you. Hi. Yeah, good to see you. Session change. We're very happy to share with you that this session is being live streamed on YouTube. So you can join us on the YouTube channel as well. The link is put in the chat box. आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि हमारा यह सेशन अभी YouTube पे भी लाइव चल रहा है. तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಸೆಷನ್ ನಮ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು. संतोष जी, अगर आप मराठी में भी बोल सकते हैं तो हमारी मराठी ऑडियंस के लिए भी अच्छा होगा. Yes. So मैम ने कहा है कि यूट्यूब में भी ये फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी नाम से अपने ऑर्गेनाइजेशन संस्था का जो चैनल है उसमें लाइव सेक्शन में ये वीडियो हम सब लोग देख सकते हैं. तो आपको सहकारी और किसी को अगर देखना होगा तो आप सजेस्ट कर सकते हो. हॅलो मॅम. तर मराठी ऑडियन्ससाठी हे याचं लाईव्ह प्रशिक्षण आहे यूट्यूब चॅनलवर. फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्युरिटी ह्या चॅनलवर लाईव्ह या टॅबमध्ये आपण बघू शकतो. तर सर्वजण आपले सहकारी वर्ग कोणी जॉईन झाले असेल त्यांना यूट्यूबवर पण हे बघू शकता. धन्यवाद संतोष.
Ichinele, we have promoted you as a panelist. Can you please accept it? नमस्कार, गुड आफ्टरनून, स्वागतम। मेरा नाम शिल्पी है और मैं पिछले 8 सालों से ग्रामीण समुदायों के साथ साझा संसाधनों के महत्व को समझने और उनके पक्ष में काम करने के लिए जुड़ी हुई हूँ। अंडर द प्रॉमिस ऑफ कॉमन्स इनिशिएटिव में आप सभी का सामुदायिक सम्मेलन के एक और संस्करण में स्वागत करती हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं प्रणाली, भास्करा, धनुकोंडा और मेरे को मॉडरेटर हैं जैन। हमें बहुत खुशी है कि आप इस पहल का हिस्सा बनने के लिए समय निकालें और कॉमन्स की इस यात्रा में योगदान देने के लिए इतने इच्छुक हैं। Yeah. Good afternoon, everyone, and thank you for joining us. On behalf of the Promise of Commons initiative, all our partners, Jen, and the entire we're community unable conference to hear team, you. am I audible? Hello, Shilpi, am I audible? Yes, you are audible. Yeah, thank you. So, good afternoon once again, and thank you for joining us. And on behalf of Promise of Commons initiative, all our partners, and the entire community conference team, I warmly welcome you to the 4th edition of Community Conference on Commons. This year, we are joined by participants from 18 states and 10 countries, featuring 164 presentations across 3 days, streamed across 150 locations through local screening. My name is Jen Audio, and I'll be moderating this session along with Shilpi. With support from Santosh, Pranali, Ichilale, Sital, and Prasanna, this is the afternoon session on day 2, channel 2, Commons on Food Sovereignty, Subsidence, and Well-being, Restoring Commons for Healthy Ecosystem. Thank you. Over to you, Shilpi. साल 2022 में यह मंच सामूहिक कहानियों और उनके प्रयासों के बारे में एक शक्तिशाली माध्यम बन गया है। आइए हम देखते हैं कुछ पल जो हमारे प्रेजेंटर्स ने हमारे साथ कल साझा किया था इस छोटे से वीडियो के द्वारा। Yesterday, we were joined by around 50 presenters who shared powerful stories on traditional knowledge, local resilience, and how communities are working to protect and restore their commons. Screenings were held across schools, colleges, community spaces, and institutions, bringing these voices to many more people. Let's get to hear from the glimpses of day 1. Let's play the video.
ऑडियो नहीं आ रहा। ऑडियो ધીમે ધીમે બાજે રે ઘોડરિયા ભણોડો નાચતો આવે. ધીમે ધીમે બાજે રે ઘોડરિયા ભણોડો નાચતો. ધીમે ધીમે બાજે રે ઘોડરિયા ભણોડો નાચતો આવે. ધીમે ધીમે બાજે રે ઘોડરિયા ભણોડો નાચતો. ભણોડો નાચતો આવે. ધીમે ધીમે બાજે રે ઘોડરિયા ભણોડો નાચતો. इस वर्ष हमें यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि 3 दिनों में 164 सामुदायिक सदस्य 10 देशों और भारत से 10 विविध विषयों पर अपनी कहानियां और अनुभवें हमारे साथ साझा कर रहे हैं। हमारा कॉन्फ्रेंस इस साल YouTube पे भी लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है। सामान्य संसाधनों जैसे कि वन, नदियाँ, चारागाह, भूजल, महासागर और उनसे जुड़े सांस्कृतिक ज्ञान हमारे जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में इन संसाधनों का महत्व और भी बढ़ जाता है। We hope that these conversations are enriching and inspiring and meaningful, along with being one among the first few of many more to come. Over to you, Chen. ये कॉन्फ्रेंस हमारे प्रॉमिस ऑफ कॉमन्स इनिशिएटिव के भाग्य से आयोजित किया जा रहा है। आप सभी से जुड़े हुए हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है। तो हम हमारी पहली प्रेजेंटेशन की ओर चलते हैं। हमारे पहले प्रेजेंटर महाराष्ट्र से हैं। श्री योगेश्वर हनुमंत माधवी जी हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं और वो अपने गांव की कहानी खड़की के बारे में हमें बताएंगे। योगेश्वर जी, आप हमारे साथ हैं? हाँ जी है। प्लीज शुरू करिए आपका कहानी। आराम से कुछ मराठी जी, थैंक यू, धन्यवाद। जी, मी योगेश हनुमंत मडावी, मुक्काम खडकी, तालुका नागबीड, जिल्हा चंद्रपूर, सामूहिक वन हक्क समिती, गाव खडकी पानोडी येथील रहिवासी असून मी सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन समिती गाव खडकी येथील
सचिव या पदावर कार्यरत असताना सचिव या पदाची कार्य पार पडत आहे. तर मी उपस्थित सर्व या कॉन्फरन्स मीटिंगला असणाऱ्या सर्व ऑडियन्स तसा जेवढे काही कोऑर्डिनेटर आहेत त्यांना मी सर्वप्रथम नमस्कार करतो, जय सेवा करतो आणि नेचर ऑफ प्रकृती शक्तीला सर्वप्रथम नमन आणि वंदन करतो आणि मी माझ्या या गावाच्या कहाणीला सुरुवात करीत आहे. माझ्या गावाचे नाव आहे खडकीपानोडी, तालुका नागभीड, जिल्हा चंद्रपूर येथील ही कहाणी आहे. या गावाची जर लगभग लोकसंख्या धरला तर आसपास 400च्या जवळपास अशी या गावाची लोकसंख्या आहे आणि या गावामध्ये 110 कुटुंब आहेत आणि या 110 कुटुंबामध्ये ट्रायबल कम्युनिटी ही 60% आहे. त्याच्यानंतर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी ही 40% आहे आणि अदर 1% 2% या पद्धतीने या गावाची रूपरेषा आहे. तर या गावामध्ये कामाचा कुठलाही व्याप नाही. या गावामध्ये शेती आणि मोलमजुरीच होते. तर अशा परिस्थितीमध्ये जो 2006 2008 सुधारित नियम 2012 हा वन हक्क कायदा शासनाने मंजूर केला. या शासनाच्या मंजुरीमधून रोजगार हमी अंतर्गत आमच्या गावाला सामूहिक वन हक्क कायद्याअंतर्गत काम मिळावे. कामासाठी आमच्या गावातील लोक बऱ्यापैकी महिला पुरुष ही स्थलांतर होत असतात आणि स्थलांतरित होत असताना आज कुठे बाहेरगावी किंवा परराज्यामध्ये कामासाठी जावं लागते. अशा प्रसंगी या सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन समितीच्या निर्मितीने सामूहिक वन हक्क कायद्याअंतर्गत आज गावामध्येच कामाची निर्मिती होण्यास चांगली सुविधा झालेली आहे आणि ते काळाची गरज आहे. मी ट्रायबल कम्युनिटी मध्येच बिलॉंग करतो, म्हणजे गोंड ट्रायबल कम्युनिटी ही भारतातली एक मुख्य कम्युनिटी आहे. तर या कम्युनिटीचा जो मुख्य उद्देश राहिलेला आहे सुरुवातीच्या काळापासून करीब 10,000 वर्षापूर्वीपासून ही कम्युनिटी भारतामध्ये आज वास्तव्यास आहे. या वेळेस या कम्युनिटीने जास्तीत जास्त प्रकृतीवर भर दिलेला आहे. प्रकृतीमधले जीव जंतू प्राणी झाड वृक्ष वेली यांच्यासोबत जीवन जगण्याचा मार्ग त्यांनी अवलंबलेला आहे. हे मार्ग अवलंबत असताना कालांतराने काळाच्या ओघामध्ये या समुदायाने आपल्या भारत देशामध्ये जगत असताना आज प्रकृतीचा नेचरचा ऱ्हास होत आहे. या ऱ्हासासोबतच आपल्याला वेगवेगळ्या समस्यांपासून आणि वेगवेगळ्या अडचणीपासून आज सामोरे जावं लागत आहे. याच्यातच डेव्हलपमेंट होत असताना जंगलांचा खूप मोठा ऱ्हास होत आहे. त्याच्यामध्ये फ्रूट प्रोसेसिंग, आज आपल्याकडे अन्न धान्य जो आहे होत आहे हा सगळ्या प्रकारच्या केमिकलचं अन्न होत आहे. या केमिकलच्या अन्नामुळे जी ट्रायबल कम्युनिटी होती किंवा जी खेड्यात जगणारी जी लोक होते, जी कम्युनिटी होती, ही आज न समजता किंवा त्यांना कुठलाच पर्याय नसताना ते लोक जंगलावर अवलंबून होते. त्या काळामध्ये जंगलातील वन्यजीव यांचे व्यवस्थित संरक्षण करत होते, व्यवस्थित जंगलाचं नियोजन करत होते. पण जेव्हापासून फॉरेस्टची जंगलामध्ये कायदे निर्मिती झाली त्यानंतर हळूहळू लोक ही संपत्ती माझी नसून ही फॉरेस्टची आहे अशा समजीमधून लोकांनी या फॉरेस्टचा आणि जंगलाचा ऱ्हास करण्यास सुरुवात केली. त्यामध्ये माझ्या गावामध्ये लगभग 250 एकर जमीन असणार जंगलाची. तर त्या जंगलामध्ये बऱ्यापैकी आमच्या याच्यामध्ये कुठलेच असे व्यवस्थित झाड नाही का ते आपल्याला जीवनामध्ये उपयोगी येतील. सर्वप्रथम आमच्या गावामध्ये मोहाचे झाड,
त्याच्यामध्ये तेंदूपत्त्याचे झाडं, त्याच्यानंतर विविध वस्तू जे इमारतीसाठी किंवा इतर कामासाठी लागतात अशा बऱ्याचशा वस्तू होत्या. पण जंगलाचा ऱ्हास झाला, जंगलतोड झाली, या कारणाने तिथली जी सगळी संपत्ती होती ते नष्टनाबूत झाली. त्याच्यामध्ये आज आपल्याकडे मुख्यतः सिन्याचे झाडं इमारतीच्या लाकडासाठी किंवा व्यवस्थित याच्यासाठी एकच असा झाड राहिलेला आहे का तो सिन्याचा झाड आहे. त्याच्यानंतर असा कुठलाही झाड आपल्याला उपयोगी पडेल असा काही झाड नाही. माझ्या गावामध्ये पुरा मैदान झालेला होता. तर अशातच आमच्या गावामध्ये 2006 तसेच सुधार नियम 2008 आणि 12 या कायद्याअंतर्गत सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन समितीला 2017 मध्ये 84 हेक्टर.23 जागा ही मंजूर झाली. म्हणजे लगभग 210 एकर जागा आम्हाला वन हक्क कायद्याअंतर्गत मिळाली. आणि ती मिळाली असल्यानंतर आम्हाला त्या कायद्याची विशेषतः माहिती नव्हती. त्या कायद्याचं सरकारकडून किंवा ग्रामपंचायतकडून किंवा शासन स्तरावरून माहिती लोकांपर्यंत पुरवण्यात आलेली नव्हती. ती 2017 पासून तर 2023 पर्यंत ती ऑफिसमध्येच राहिली. त्याच्यानंतर 2023च्या ज्या ग्रामपंचायतच्या ग्रामसभेमध्ये ग्रामसेवक मॅडम यांनी ती याच्यामध्ये आणण्यात आली, मांडणीमध्ये आणली. त्यांनी ठराव घेण्याचा ठरवला आणि तिथे विषय ठेवून तिथं ती समिती निर्मितीच एक विषय मांडण्यात आला. त्या विषयामध्ये असं झालं का समित्या तो ग्रामसभा चालू असताना लोकांमधून अशी माहिती निघाली का आज समित्या ह्या कागदावरच असतात, कागदावरच काम करतात, कागदाचेच घोडे बनवतात असा लोकांचा समज होता. आणि त्याच याच्यामधून ही पण समिती वन हक्क कायदा समिती ही पण तशीच समिती असणार. म्हणजे वन हक्क व्यवस्थापन समिती तयार करत असताना लोकांना पण तो समज होता का ही समिती फक्त कागदावरच राहणार, या समितीचा कुठलाच गावाला फायदा होणार नाही. तर अशा याच्यामध्ये जेवढे काही लोक होते 100च्या वर लोक आमच्या ग्रामसभेला उपस्थित होते. म्हणजे ग्रामपंचायतच्या या ग्रामसभेला लोक उपस्थित असताना त्यांचा समज असा होता की ह्या समित्या कागदावर असताना कुठलाच गावाला लाभ होत नाही, त्यामुळे त्यांनी या समितीमध्ये कोणीही भाग घेऊ नये व समिती बनवू नये असा पण त्या गावामध्ये आमच्या गावामध्ये सूर निघाला होता. अशातच मग महिलांनी याच्यामध्ये पुढाकार घेऊन 7 महिलांनी आम्ही यामध्ये सदस्यत्व घेऊ, आम्ही या समितीमध्ये काम करू, या समितीचे नेतृत्व करू, यावर समिती तयार करण्यासाठी महिलांनी पुढाकार घेतला. त्यामध्ये मग निवडक महिलांनी आपापली नावे देण्यास सुरुवात केली. त्यामध्ये नियमाप्रमाणे ही समिती बनवण्यात आली. त्यामध्ये ट्रायबल कम्युनिटी, एससी कम्युनिटी तसेच ओबीसी कम्युनिटी अशा पद्धतीने भाग पाडून त्यामध्ये महिलांची हिस्सेदारी ही 7 सदस्य म्हणून ठेवण्यात आली. त्यामध्ये माननीय अध्यक्ष सौ शर्मिलाताई अनिल मडावी ह्या अध्यक्षा म्हणून घोषित झाल्या वर त्या आज अध्यक्ष म्हणून या पदावर कार्यरत आहेत. त्यानंतर सचिव पदाची जी परिस्थिती आली, सचिव निवडाची होती. तर सचिव मध्ये जर कार्यालयीन कामे करायचे असतील, तहसीलवरचे काम करायचे असतील, जिल्ह्यावरचे काम करायचे असतील, कुठे आदिवासी प्रोजेक्ट ऑफिस मध्ये जाण्याचा भाग पडला तर सचिव मध्ये पुरुष मंडळी गरजेचा आहे असा ग्रामसभेत ठरवण्यात आला. तर त्यामध्ये मी योगेश हनुमंत मडावी स्वतःहून मी सचिव पद मागितला की जी तुमचा हा समज आहे की ह्या समित्या किंवा कुठलेही सिस्टम हे कागदावरच असतात, तर आपण काय करायचं का ही कागदावर न करता आम्ही स्वतः या ठिकाणी मेहनत घेऊ आणि या कायद्याची अंमलबजावणी करू, या कायद्याची निर्मिती करू, या कायद्याला समोर नेण्याचं काम करू. याच्यासाठी मी स्वतः सचिव म्हणून या पदावर स्वतःची मागणी करून घेतली आणि त्या ग्रामसभेमध्ये सचिव म्हणून कार्यरत सुरू केले. त्यानंतर
त्यानंतर जो तिसरा पद येते खजिनदार खजिनदार कोषाध्यक्ष म्हणून, तर त्या ठिकाणी मी आमच्या गावातील एससी समाजाची व्यक्तिमत्व सौ अलकाताई वामन मेश्राम यांनी तो पद माझ्याकडे द्या असं त्यांनी आपला मत वाटलं व त्या ग्रामसभेमध्ये त्यांना तो कोषाध्यक्षाचा पद देण्यात आला. तिथून समितीची निर्मिती झाली. त्या समितीमध्ये महिला आहेत, त्यामध्ये 4 पुरुष आहेत, असा 11ची समिती तयार करण्यात आली. आणि 2023ला जी ग्रामसभा झाली त्यामध्ये एकमताने ठराव पास झाला आणि सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन समितीची निर्मिती झाली. तिथून मी आपल्या कार्याला सुरुवात केली. आमच्या गावातून वेळोवेळी आम्ही ग्रामसभा घेण्यात आल्या आणि हा काम कसा समोर न्यायचा, कसा का करायचा, या पद्धतीने कार्य सुरू केले आणि वारंवार ग्रामसभा घेऊन गावामध्ये वातावरण निर्मिती झाली. आणि 16 ऑक्टोबर 2025ला आम्ही एक ग्रामसभा घेतली. त्या ग्रामसभेमध्ये रोजगार सेवकाची निर्मिती करण्यात आली, तशी बेअरफूट टेक्निशियनची निर्मिती करण्यात आली आणि ते 2 पद, एक प्रवीण नैताम आणि विकिता मडावी यांना बेअरफूट टेक्निशियन पद हा देण्यात आला व तिथून आमच्या या वन समितीचे कार्य सुरू झाले. आणि आम्ही नंतर या सर्व समितीच्या मदतीने वारंवार मीटिंगा घेणे, तसेच कुठल्या कार्यशाळेला जाणे, तसेच जिथे जिथे आमच्या गावाजवळ एक वासाडा मक्ता सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन समितीचे कार्य चांगले आहेत, तर त्या वासाडा मक्त्याला आम्ही ट्रॅक्टरने जाऊन अभ्यास दौरा केलेला आहे 2दा. त्या ठिकाणी त्यांचं काम कसा का चालते, ते कसे का काम करतात, त्यांनी कसा का रोजगार निर्मिती केली, याबद्दल मार्गदर्शन घेण्यासाठी आम्ही 2024 मध्ये 2दा आम्ही तिथं भेट दिल्या. त्या भेटीनंतर एकदा आम्ही 8 मार्चला महिला दिनी त्या ठिकाणी उपस्थित झालो व महिलांना एक शक्ती जागृती निर्माण झाली आणि पुन्हा कार्य वेगाला सुरुवात झाली. अशातच आम्ही 2024-25 त्यानंतर 2025-26 असे आराखडे गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती नागभीड, तहसीलदार साहेब तालुका नागभीड, तसेच प्रोजेक्ट ऑफिस चिमूर या ठिकाणी आपल्या कामाचे अंदाजपत्रके, आराखडे देण्यात आले आणि तिथं लगातार पाठपुरावा करत राहिलो. त्याच्यानंतर आम्ही पुन्हा फायनल आराखडा 8 मे 2025ला देण्यात आला. त्याच्यानंतर आमच्या गावामध्ये त्या पाठपुरावा केल्यानंतर 22 ऑगस्ट 2025 मध्ये रोजगार हमी अंतर्गत कामाची सुरुवात झाली आणि वन हक्क कायदा काय आणि कशा पद्धतीने कार्यरत करतो यावर आम्हाला विश्वास पटला आणि 22 ऑगस्ट 2025 पासून आम्ही आमच्या कार्याला कामाला सुरुवात केली. सर्वप्रथम आमच्या गावामध्ये जी स्थलांतराची जी पद्धत होती, कारण की आमच्या गावामध्ये 2 महिन्याचा काम असायचा, रोवणी एक आणि धान कापणी एक, त्याच्यानंतर कुठलाच काम नसायचा. तर अशातच जो ऑगस्ट महिना असते, ऑगस्ट महिन्यापर्यंत आमचे रोवणीचे काम बऱ्यापैकी झालेले असते. अशातच आम्ही गावामध्ये नियोजन केला की काही लोक शेतीकडे जायचं, ज्यांना शेतीमध्ये जाण्याची गरज वाटते अशा लोकांनी शेतीत जायचं आणि ज्यांना कुणाला वाटते का वन समितीच्या कार्यामध्ये आपण काम करायचं, अशा पद्धतीने ग्रामसभा घेऊन गावामध्ये नियोजन करण्यात आला आणि त्या कामाला सुरुवात झाली. सर्वात प्रथम आम्ही खड्डे खोदण्याचा काम जो आहे तो पूर्ण केला. त्याच्यानंतर आम्ही वृक्ष लागवड केली. तर वृक्ष लागवड करीत असताना त्यामध्ये 550 झाडं आंब्याचे, 550 झाडं चिक्कूचे,
550 झाडं फणसाचे, 550 झाडं पेरूचे, असे हे फळझाडं लागवड करण्यात आली. त्याच्यानंतर आमच्या गावामध्ये आमची जमीन जी अशी आहे का त्या जमिनीमध्ये सीताफळाची बाग ही चांगल्या पद्धतीने होते आणि याच्या पहिलेही आमच्या गावामध्ये सीताफळाचे झाडं नॅचरली भरपूर आहेत. आमच्या या जंगलामध्ये पण सीताफळाचे झाडं भरपूर नॅचरली असल्या कारणाने आम्हाला असं लक्षात आला का सीताफळाचे झाडं आपल्या जागेमध्ये चांगल्या पद्धतीने होतात, म्हणून सीताफळाचे 900 झाडं लागवड करण्यात आले. त्याच पद्धतीने आमच्या गावाला जांभूळ पण चांगल्या पद्धतीने होते. जांभूळ ही लावण्यात आली, त्यामध्ये जांभूळचे झाडं 300 लावण्यात आले. त्याच्यानंतर चिंच पण लावण्यात आली, चिंचेचे ते 300 आणि नॅचरल फूड म्हणून एक कवट नावाचा जो फळ आहे तो पण लावण्यात आला आणि अशा पद्धतीने आमची फळबाग सजवण्यात आली. या फळबागेमध्ये सर्व झाडांची जर आपण संख्या बघितली तर 4200 अशी संख्या होते. ही संख्या होत असताना आमच्या या बागेमध्ये पाण्याची व्यवस्था नव्हती. पाणी व्यवस्थापन नसल्या कारणाने गावातीलच या 132 गट नंबरच्या बाजूला 136 नंबरचा एक शेतकरी गट आहे. त्या गटामध्ये पाण्याची व्यवस्था आहे. तर गाव या नात्याने आम्ही त्यांना विनंती केली. माननीय ईश्वरभाऊ मडावी यांनी या पाण्यासाठी त्यांनी होकार दिला. त्यांना आम्ही विनंती केली की आमचा जोपर्यंत पाण्याची व्यवस्था होत नाही तोपर्यंत तुम्ही आम्हाला तुमच्या बोरमधून पाणी देण्याची त्यांना विनंती केली. त्यांनी पाणी देण्यास होकार दिला व झाड लावल्यानंतर, वृक्ष लागवड झाल्यानंतर आम्ही छोटे छोटे खड्डे तयार करून तिथं पाईपाद्वारे पाणी टाकून तिथून आमचे वन समितीचे जे मजूर आहेत ते तिथून गुंडाने पाणी नेतात आणि एक एक झाडापर्यंत पाण्याची पुरवठा करीत असतात. अशात आमच्या कामाला व्यवस्थित सुरुवात झाली आणि आम्ही पाण्याची व्यवस्था नसल्या कारणाने ग्रामसभेमध्ये असा एक ठराव करण्यात आला आहे की आपण वन हक्क व्यवस्थापन समितीला एक रोजी म्हणजेच एक मजुरी 312 रुपये ही हप्त्याला देण्याचं असा ग्रामसभेमध्ये ठराव करण्यात आला आणि त्या पद्धतीने आज कार्य सुरू आहे. आज ऑगस्ट पासून तर डिसेंबर पर्यंत संपूर्ण काम व्यवस्थित चालू आहे आणि आमच्या गावचे मजूर पण त्या कामाला सहकार्य करत आहेत. मेहनत पण चांगली घेतात. कोणीही जी आजपर्यंत जी शासनाची जी रोजगार हमी ही होत होती ती जर विचार करता रोजगार हमी म्हणजे वन हक्क समितीची जी रोजगार हमी आहे किंवा कायद्याअंतर्गत जी रोजगार हमी आहे ही खरंच वेगळी आहे आणि या समितीचा काम आणि या कामाची जी पद्धत आहे ही वेगळी आहे. आणि ज्या या पहिल्याच्या ज्या रोजगार हमी होत होत्या यामध्ये कसा लोकांना वाटायचं का रोजगार हमी आणि काम कमी या पद्धतीचं तिथं एक घोषवाक्य तयार झाला होता. पण वन हक्क समिती आणि वन हक्क कायदा 2006, सुधार नियम 2008 आणि 2012 या अंतर्गत मेहनत काय, मेहनतीचं फळ काय आणि मेहनत केल्यामुळे कसं काय हे रोजगार हमीतून आपल्याला रोजगार निर्मिती होऊ शकते आणि आपण गावामध्ये काय पैसा निर्मिती करू शकतो. आज आमच्या गावामध्ये अशी यावर्षी दिवाळी साजरी झाली की 40 कुटुंबांमध्ये ऐन दिवाळीच्या टायमामध्ये 10-10 हजाराचा उत्पन्न त्यांच्या खात्यामध्ये जमा झालेला होता. एक खट्टा 3-4 हप्त्याचा पगार त्या ठिकाणी जमा झालेला होता. आज त्या गावामध्ये अशी परिस्थिती निर्माण झाली की 40 परिवारांची दिवाळी आज चांगल्या पद्धतीने साजरी झाली होती. आज खेड्यागावातली दिवाळी म्हटला लहान मुलाबाळांना कपडे घेणे, इतर वस्तू घेणे, तर त्या कुटुंबांना असं झालं का वन हक्क समितीच्या मार्फतीने, रोजगार हमीच्या मार्फतीने त्यास आज कुटुंबामध्ये 40 कुटुंबामध्ये 10-10 हजार जेव्हा रुपये गेले तर त्यांना आनंद गगनात मावेन असा झाला व त्यांनी त्या
उत्पन्नाचा चांगला उपयोग करून एकदम जो रोजगार हमीचा जो मुख्य उद्देश आहे तो त्यांना समजून आला. आज स्थलांतराचे प्रमाण हे कमी होत आहे. आमच्या गावामध्ये पहिलं 30-40 लेबर कर्नाटकामध्ये आंध्रामध्ये रोहनीच्या कामासाठी जात होते. आज तिथून कमी झालेले आहेत. काही यावर्षी 5-6 लोक गेले आहेत. याच्या समोर आम्ही पुन्हा काम निर्मिती करू. म्हणजे आमच्या ज्या आराखड्याच्या फाईल टाकलेल्या होत्या त्या 7 फाईल टाकलेल्या होत्या, पण टायमाअभावी आम्ही 3च फाईलीचा काम पूर्ण करू शकलो. त्यामुळे पुन्हा रोजगार निर्मिती करता आली नाही. जर आम्ही 5 फाईलची निर्मिती जर केली असती तर आम्हाला खरंच आमच्या गावातून एकही लेबर दुसऱ्या गावाला स्थलांतर झाला नसता आणि रोजगार हमीमध्ये संपूर्ण कुटुंब सहभागी झाले असते. आणि त्याच्यामध्ये एक आमच्या गावाला अडचण निर्माण झाली होती की जंगल छोटासा आहे आणि आमच्या गाव हा कामाची निर्मिती नसल्याने त्या ठिकाणी जो पशुधन आहे, पशुधनाला चाऱ्याची समस्या निर्माण झाली. त्यांना त्या जेवढे काही पशुपालक आहेत त्यांच्यासोबत आम्ही चर्चा करून त्यांना व्यवस्थित समजावून सांगितली का जे गट नंबर 132 नंबर आहे त्याच्यामध्ये आपण फळबाग लागवड करत आहोत, तर त्या फळबागेमध्ये तुमचे जनावर गेली नाही पाहिजे. तुम्ही जो दुसरा जंगल आहे 126 नंबरचा त्या ठिकाणी तुम्ही आपल्या गुराढोर शेळ्या यांची व्यवस्था करा, तिथे नेना. त्या लोकांनी सुद्धा आम्हाला असा सहकार्य केला. आज ऑगस्ट पासून तर डिसेंबर पर्यंतच्या काळामध्ये एकही जनावर आमच्या फळबागड लागलेल्या क्षेत्रामध्ये आज आलेले नाही. म्हणजे संपूर्ण गावच्या गाव आम्हाला सहकार्य करीत आहे. तर अशा परिस्थितीत एकंदरीत आमच्या गावाचं व्यवस्थित काम सुरू आहे. सगळं शासन प्रशासन या सर्वांनी आम्हाला सहकार्य केलेलं आहे. वेळोवेळी आमचे जे राऊत जे आहेत वासाडा मक्त्याचे यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलेले आहेत. त्याच पद्धतीने आमच्यासोबत गणेशजी भोते हे सुरुवातीपासून राहिलेले आहेत. यांनी पण फार असा मोलाचं मार्गदर्शन केलेलं आहे. अशा पद्धतीने एकंदरीत माझ्या गावची ही सफल अशी जर्नी आहे आणि मी सर्वांना पुनश्च धन्यवाद करतो, जय सेवा करतो आणि नमस्कार करतो. योगेश्वर जी बहुत बहुत धन्यवाद. आपने जिस इतने जोश से जो हमको खड़की के स्टोरी के बारे में बताया, जो हमको पूरी तो समझ नहीं आई पर जितनी हमको समझ में आई बहुत ही अच्छा आपने बताया. मैं संतोष जी को बताऊंगी कि प्लीज आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए. धन्यवाद Okay. योगेश्वर जी. धन्यवाद मैम. सभी को जय सेवा, नमस्कार. मैं संतोष हूँ. अभी योगेश जी के साथ बैठा हूँ और मैंने भी स्टोरी सुनी. तो मैं आप सबके अंडरस्टैंडिंग के लिए यही स्टोरी हिंदी में आपके साथ पेश करना चाहता हूँ. तो खड़की जो विलेज है उनको जो वन अधिकार कानून जो है 2006 नियम 2012 और सुधारित नियम 2008 और सुधारित नियम 2012 के अनुसार जो उनको राइट्स मिले हैं 3(1) के अंडर, जो अलग अलग तरह के राइट्स मिले हैं कि गांव स्तर जो उनका फॉरेस्ट कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स उनको मिले हैं, तो उस एरिया से नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो या चराई क्षेत्र हो या फिश हो, तो ऐसे सारे NTFPO एक्सेस कर सकते हैं और ये राइट्स एक्सेस कर सकते हैं. बट ये जो है ये सिर्फ पेपर वर्क था अभी तक. गांव वालों लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि ये अधिकार हमें मिले हैं और ये अधिकार तो मिले हैं और गांव के ग्राम पंचायत में ये टाइटल कॉपी सिर्फ पड़ा है. बट उसके बाद जो योगेश जी ने गांव स्तर पे जो गांव समुदाय के साथ जो काम किया, गांव लोगों को हमारे सहकार्य से, हमारे जो कार्यकर्ता है उनके सहकार्य से जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन किया, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग किया, वन अधिकार नियम कानून पे जो उनकी समझ बढ़ाई, उसके बेस पे उन्होंने एक कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स मैनेजमेंट कमिटी जिसको CFRMC बोलते हैं, जैसे क्लेम मिलने के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट होता है, फॉरेस्ट राइट कमिटी होती है,
पोस्ट हाँ जी। क्लेम का काम आगे बढ़ाने के लिए ये CFRMC कमेटी होती है। इस कमेटी का जो एक काम होता है कि गांव स्तर पर वो गांव को जो CFR राइट्स मिले हैं, उनको जो क्षेत्र मिले हैं, उसका प्रॉपर रेगुलेशन, उसका सस्टेनेबिलिटी कैसे बढ़े, उसका प्रोटेक्शन कैसे हो, उसका मैनेजमेंट कैसे हो, उसका कंजर्वेशन कैसे हो, और उससे लाइवलीहुड और कैसे जनरेट करे। तो बेसिकली गांव समुदाय से 8-9 मेंबर और 8-9 मेंबर उस कमेटी में होते हैं। एक सचिव, एक सदस्य, एक खनिजदार और एक अध्यक्ष ऐसे उस कमेटी में होते हैं। और मोस्टली शेड्यूल्ड ट्राइब्स में से ही उनका अध्यक्ष रहना चाहिए, ऐसे उसमें है। तो कमेटी का काम यही है कि जो विभिन्न गांव स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे या डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जो गवर्नमेंट काम कर रही है, तो उनके तरफ से जो भी स्कीम्स आ रही है उनके साथ लाइजनिंग करना। तो यही इस कमेटी सिर्फ जैसे गांव स्तर पे लोगों को पता था कि हमें राइट्स तो मिले, लेकिन ये कमेटी बन के क्या होगा, ये कमेटी भी पेपर वर्क ही रहेगी क्या? तो ये बात और ये उनको इरेज करनी थी और लोगों को ये बताना था कि नहीं, ये कानून में लिखा है तो कागज में लिखा है तो जमीन में भी दिखेगा। तो इन्होंने कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ कम्युनिटी जो CFRMC मेंबर से गांव स्तर पे उनको बताया कि कैसे हम जो मनरेगा का 30 नवंबर 2021 का एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक रेगुलेशन निकला है, उसके द्वारा हम CFR एरिया में अगर हमें कुछ कंजर्वेशन, मैनेजमेंट और लाइवलीहुड के लिए अगर कुछ काम करना है, तो ये काम को आगे लेने के लिए हम कैसे एक्सेस टू फाइनेंस, मतलब पैसों का कैसे निर्धार कर सकते हैं और गांव स्तर पे हम काम शुरुआत कर सकते हैं। तो यही 30 नवंबर 2021 का महाराष्ट्र शासन का GR का उन्होंने असिस्टेंस लेते हुए गांव स्तर पे लोगों की सहायता लेते हुए उनके CFR एरिया में काम शुरू किया। स्टार्टिंग में उन्होंने डिगिंग, जो प्लांटेशन के लिए जो खड्डे चाहिए उनका स्टार्टिंग किया। देन उन्होंने अलग अलग तरह के फ्रूट प्लांटेशन, जिसमें जामुन है, सीताफल है, मैंगो है, ऐसे अलग अलग तरह के 4,200 फ्रूट प्लांटेशन उन्होंने अभी तक किए। इसका आउटकम ये रहा कि गांव स्तर पर जो महिला है और बाकी वर्ग जो है, पीड़ित वर्ग जो बाहर माइग्रेट होता था, मतलब नियर स्टेट में, तो उनका एक माइग्रेशन रेट कम हुआ। गांव जी। स्तर पे लोगों को लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। और जी। जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है उनमें फॉरेस्ट कवर, जो हम बायोमास बोल सकते हैं, या फॉरेस्ट ट्री कवर, उसमें एक एडिशन उसमें हुआ। तो थ्रू आउट द प्रोसेस उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, बट चैलेंजेस उनके लिए, मुझे लगता है उनके स्टोरी से उन्होंने चैलेंजेस पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने फोकसिंग किया कि सॉल्यूशन पे। जैसे एक वाटर का चैलेंजेस उनको आया कि ऐसे लार्ज स्केल पे अगर फ्रूट प्लांटेशन कर रहे हैं तो वाटर एक्सेस कैसे करे। तो उन्होंने एक उनके ही समुदाय के मेंबर को, जो फार्मर है, उनका खेत फॉरेस्ट के पास है, तो उनको कन्विंस किया कि हमें आपके जो वेल है उससे वाटर चाहिए, वाटर सप्लाई। तो उन्होंने वहां पे उनके CFR एरिया में उन्होंने खड्डा करके उसमें पानी लाया और सभी लोग फिर वो वाटर एक्सेस मतलब कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जर्नी जो रहा है कि कैसे एक कम्युनिटी लेड, गवर्नमेंट लेड इंस्टीट्यूशन का उन्होंने सहायता लेते हुए गांव स्तर पर रोजगार और फ्रूट प्लांटेशन स्टार्ट किया। तो ये जर्नी खड़की गांव का रहा है। यस, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। और एक एडिशन, इसमें एक स्मॉल एडिशन जी, मैं बताइए। बताना चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स को कि कैसे लोकल, जैसे गांव स्तर पे कैसे मतलब सॉल्यूशन को, जैसे उनको पानी की समस्या अभी जा रही थी, तो इन्होंने जो CFR एरिया पे, यहाँ पे वाटर, अगर उनको बोरवेल लेना है या और कोई प्लांटेशन करना है या किसी और को कोई प्रॉब्लम फाइनेंशियली अगर कोई फेस कर रहा हो, तो जो भी मेंबर इस यहाँ पे रोजगार जिनको मिल रहा है, तो वो एक वीक का रोजगार उसमें ग्राम सभा को देंगे, ताकि इनकेस अगर फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो पैसा वो किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, या कोई फैसिलिटी उनको क्रिएट करनी है CFR एरिया में गांव स्तर पे, तो उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू, जय सेवा सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। योगेश जी, आपकी भी कहानी हम सब ने सुनी और उससे काफी हम लोगों के भावनाओं को बहुत अच्छी लगी कि आपके गांव में आप लोगों ने इतना अच्छा
किया है। तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में थोड़ा ट्रांसलेट करना चाहूँगी जो हमारे कर्नाटका से जुड़े हुए दोस्त। तो ಈಗ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ. ಅವರಿರೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಟ್ರೈಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಇಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಇರೋದು. ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಅರಣ್ಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಈಗ ಅವ್ರ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು CFRMC ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರ MGNRGAದು ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4000 ಪ್ಲಸ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ವಾಟರಿಂಗ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಈ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ದು ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಖಡ್ಕಿದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Chen, would you like to? Shilpi, would you like to give a 2-3 lines with summarization in English? Sure, I will. Yes. So today's story is from Maharashtra, Khadki village in Maharashtra, and Yogeshwarji is talking about the collective action that their village community has taken, primarily a tribal community, and they are largely dependent on the forest resources in their area. And it is very heartwarming to see that the community has come collectively to take forward the reason of sustainable forest management, and they've done this at all levels. They have gone leveraged government schemes and programs to ensure that this forest resources can be sustainably managed, and also it is not only liaising with the outside but also within their community. They have managed to ensure that every participant of their community is an equal partaker in this entire process. And they did this through the collective action by forming a CFRMC committee, which helps them to determine their rights on the forest lands. During this entire process, they faced a lot of challenges and a lot of problems where they had to do a lot of back and forth with the government government offices, where they submitted their applications, they gave in they completed the paperwork for all to get these titles. And the struggle has been for quite some time, but they are been able to create that liaison between the government departments and are also able to get titles for their community at present. Along with that, with leverage from government programs like MGNRGA, they have managed to have a comprehensive plan made for their village where almost more than 75 lakhs rupees was leveraged, and they took up first pitting activities, plantation, a lot of local species was planted. Horticulture species like mangoes, custard apple was also planted, which helped them to generate a food security for their particular community. It not only enhanced their food security, but also improved their livelihoods, because the produce that they got from this helped them. And previously, before this had happened, a lot of them would migrate to the neighboring states for employment. But with these opportunities that have come, their local youth are also not migrating anymore, and their employment has significantly improved. So now Khadki stands like an example, like a learning site for many of the neighboring villages, and they come to Khadki to learn and understand how this community has collectively taken this process forward. So it's definitely very commendable. Thank you, Yogeshwar. Amazing. Thank you, Yogeshwar, for the great presentation, and thank you to Santosh and Shilpi for translating. The story of Khadki is truly inspiring
a reminder of how communities can nurture both forest and food systems together. We appreciate you sharing their encouraging and hopeful example with us. Thank you so much. Before we go to next presenter, we take the question letter. Yeah. We have next presenter is Tefukele Pirha from Kikuema Village, Kohima, Nagaland. He will be presenting a case study on community engagement at the Akile Potato Farm, Kikuema, for the Community Conference on Common 2025. Let's hear from him. Yeah, Tefukele. Before फिरे जी starts, just a quick introduction in Hindi. फिरे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं नागालैंड से और वो हमारे साथ उनका जो इनिशिएटिव है किग्वेमे में उनके अकेले पोटैटो फार्म उसके बारे में हमको सब समझाएंगे. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಈಗ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಶ್ರೀ ಫೀರೆ ಅವರು ನಿಮ್ದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆದು ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Over to you, Mr. Phil. Okay, thank you. Our respected hosts, Ms. Shilpi and Mr. Chen Audio, and my esteemed co-presenters and our visitors who are viewing this session and who are joining our session. And thank you, FES, for offering this wonderful opportunity so that we can showcase our rich traditional culture and customs and agricultural practices to the world. So starting my session, my introduction, I am Tefukele Pirha and I am from Kikuema Village, which is located 14 kilometers away from the capital city of Nagaland, that is Kohima. So the famous Hornbill Festival, which got over yesterday, which was held in Nagaland from December 1 to 10, it is held in our village. It touches the part of our village. So our village is also very well known as a historical site in Nagaland. So coming back to our topic, I'll be presenting the topic on community engagement at Akile Potato Farm, Kikuema. So could you please share the first slide? Yes. So I'll be presenting a brief overview of the farm. Akile Potato Farm, Kikuema. It is a community-owned agricultural landscape in Kikuema. In Nagaland, basically most land holdings are either private or community-owned. The major tracts of land are owned by private individuals and by the community, and we have a very strong land holding system in Nagaland. So the Akile Potato Farm is known for its sustainable organic farming, our community resource governance, and as well as it is also emerging as an agroforestry ecotourism destination. It has been included in the tourist circuit in Kohima district also. So the farm is also a model for community-based commons management in Nagaland, where the community members take the main part. So the community land is mainly cultivated, and the cultivation held at our Akile Potato Farm, it is quite different from the wet terrace paddy cultivation, which is more commonly practiced in the plain areas. So here we practice a type of slash and burn cultivation. So regarding the slash and burn cultivation, we will clear an area, a portion of an area for cultivation. So we will cultivate that for 2-3 years, and then after cultivating for 2-3 years, we'll stop cultivating in that particular area to allow it to rejuvenate and regain soil fertility. And we'll cultivate for 2-3 years in another area and come back to the same area. So it is a very sustainable mode of agriculture. So the primary crops we cultivate at the farm are
potato and cabbages, which grows very well in the cold areas. As our Nagaland district, we experience a somewhat colder climate and with perennial rainfall all during the months of May till September. So the cultivators mostly engage in the cultivation of potatoes and cabbages. Can we see that? Okay. Okay, coming to the community governance of lands and forests. Like I was saying, the land holdings are mostly either individual or community owned. So in Nagaland, in Nagaland, especially within the Angami tribe, which we belong to, we have a very strong community life here. So the community mostly makes the rules and regulations to be followed by the community members regarding day-to-day life, then forest area, then about sharing of water for irrigation and different laws. So the community also establishes rules for timber and firewood extraction, construction materials, then demarcation for agriculture, then extraction of stones for construction purposes, and so on. So can we go over to the next slide, please? So at the farm, visitors can witness our culture and biodiversity conservation, which is going on, happening at the farm. So like I was mentioning before, we follow the traditional and indigenous farming methods, such as sustainable crop rotation, then organic agriculture without chemical inputs, which gives which helps in soil resilience. So by sustainable crop rotation, we mean to say that we cultivate different types of crops in the same plot over a year. So from the month of January to March, we can plant and harvest one crop. Then from April to July, we can plant potatoes and harvest in the month of July and August. Then after that, we can clear the same patch of land again, and we can, for winter farming, we can cultivate cabbages. So it's like that crop rotation. We can grow different types of crop in the same area of land over and over again. I think this also increases the soil fertility. And mention may be made that at the farm, we don't use any type of pesticides or insecticides or fertilizers. Everything is purely organic. So moving on to the other portion of conservation of biodiversity, the community has put up different rules regulating the extraction of forests and the wildlife resources. So we prohibit hunting and fishing whole year round. And then some cases and some instances, we witness wildlife, human and animal conflict at the cultivated area. So which we try to solve through measures like also try to set up separate pasture zones for cows and buffaloes so that the human-animal conflict can be minimized. Yes, please. The next slide. So here in the picture, we have put up different signages like this, signboards at the farm to show to our community members as well as the visitors about the conservation measures which we're undertaking. So here in the picture, this is my team. Actually, our team is looking after the ecotourism venture in the potato farm right now. So following up with our ecotourism, agroforestry ecotourism, we've put up different signages so that the visitors can be aware of. So here, hunting is prohibited,
and then scavenging, uprooting, cutting, and destruction of edible plants, flowers, trees, and any flora is totally prohibited without permission. And then, okay, the rest are just general rules. So okay, move over to the next slide. Next slide, please. I'll refer from the screen here instead of referring to the other one. Okay, thank you. So we're trying to come up with a source of with agroforestry ecotourism in line with the agriculture. We've taken up this to promote a sustainable source of livelihood, especially for the younger generation. We see a vast potential in ecotourism even in the present, and definitely more to come in the future. So what we're doing at the community farm is we've put up a nominal fee for visitors. So this fee is used by the community members. We use this and sanitation fee. We call it a sanitation fee. So visitors pay this fee to experience organic farming, forest and water management, local biodiversity, and cultural practices, which we undertake at the farm. So this also supports conservation awareness and community income on a very nominal basis. That is, we're slowly trying to improve the ecotourism in the next few years. And the main attraction of ecotourism at the farm is the blossoming of the hydrangea flowers, which you will see in the later slides. The flowers, which we will see in the later slides. So we've seen visitors this year and last year. We had a good footfall of visitors coming to the farm during the big blossoming season of the hydrangea flowers. So the hydrangea flowers, it is a tourist attraction, but it's not edible. So what happened was the hydrangea flowers, which were planted beside the huts of the cultivators, soon it grew well. I think the soil and the landscape, as well as the altitude and topography of the farm, suited the quick growth of the flowers. So it has turned into a sensation, I must say. It has turned into a tourist sensation. So visitors flock in huge numbers during the blossoming season. That is from the last week of May till then throughout the whole month of June, and then till the second week of July. After which the flowers gradually fade away. So while I'm on the topic of ecotourism now, I'll jump to the later slides also. So regarding the ecotourism going on in our farm, we've also achieved a terrific recognition, I might say. So this year, the Northeast Tourism Awards, the committee, they put out an open competition from across all the 7 states of the Northeast. So in that competition, we also applied. So out of 700 entries across Northeast India applying for the different categories of awards, we came out as the best of 5 in 2 categories. That is, the first award is Best Sustainable Tourism Practice, and the second is Best Cultural Heritage Conservation Efforts. Both were in the category of Sustainability and Community Engagement Awards.
So indeed, definitely, this award has also put our small farm on the map as well as the state of Nagaland on the map of Northeast, and as an emerging destination to visit in the tourism circuit of Northeast India. So in the pictures here, which the host have put up, these are the different entry points and signboards and rules and regulations. Also, signages depicting the different locations to the farm and the footpaths like that. So, and we have also put up the different, set up the different amenities such as toilets, washrooms, then water tanks, which the visitors and the community members can make use of. So now in the pictures, the first picture on my left, this is the bloom of the potato plants in the farm. Then the middle picture is during the first photo is taken in the March, in the month of most probably between April to May. Then the middle picture, it is also the potato field. This is slash and burn method, which is our traditional method, and it is very sustainable. So here, this picture is most probably taken during the month of February to March, during the dry season. And the last picture, the third to my right, is a cabbage field. So this will be taken during the month of January to February. So like that, I was saying earlier, we can do crop rotation. We can cultivate different types of vegetables in the same patch of land over and over again. So it is very sustainable. Okay, water governance practices. So water is the most essential commodity of life after the air that we breathe in. So at the farm, we are blessed with a very good source of perennial, with a very good perennial source of water. So we have several springs, natural springs flowing in different locations around the stream, around the farm. So from the springs, we have small ponds, then small streams, then to further develop the management of water resources for the use of our community members as well as to promote the ecotourism venture. We've undertaken construction of water tanks, not very large, but medium-sized water tanks through which we can store water and use for our consumption and as well as for sanitation purposes. And we've also constructed an aquatic pond in the middle of the farm. So that is quite big. So it is also a aquatic hotspot where different aquatic species can be found in the pond, such as frogs and then crabs and then worms. I don't know the scientific name, okay, but not fishes. Since it's too cold in the farm, we don't have fishes at present in the farm. So we have also dug, you may say, constructed trenches, and we have dug small ponds in and around the main water bodies, the main water springs, which can be found in the farm. So we can move on. You can show the next slide, please. The water bodies. The slide of the water bodies, please. It is Okay, displayed thank on you. the screen.
Okay, so besides the different practices which we've discussed, our community members also take up apiculture, which means the rearing and production of honeybees. So we keep all we keep beehives beside our huts all around the farm. So the beehives also the bees act as a it is the one of the best pollinate source of pollinators and as well as for dispersal of seeds like that. So and as well as the bees give a minimum source of honey products and which the community members can either use for consumption as well as for commercial purposes. So that also helps in a small way. It helps the community members. So in the picture, you can see the water tank on my left, which we've constructed with my team. And then this is also another water tank, which we have constructed. So we've constructed 2-3 water tanks like this in different areas at the farm. So people can, our community members can get access to clean drinking water, clean and hygienic drinking water for consumption as well as for sanitation purposes. So I've already mentioned these awards and recognition, but you can go through it definitely. So we got this award this same year, and on my right, on my left, the one on my left is a beehive. So we put hollow logs. We cut and put hollow logs like this to use as beehives. So we place them in different locations, especially beside our huts. Not huts, huts, HUTS. So the right on the picture to my right, it is during the blossoming season of the hydrangea flowers, during the top visiting season. So we make indigenous benches like this so visitors can come and rest. This So these are also inside the farm, yes, these are inside the farm. the So this is benches to promote for our visitors who come in. yes, those are bamboo and wooden benches. Yeah. So we've installed those for the convenience of the visitors during the peak blossoming season, during the top visiting season for the tourists. So regarding the farm, if you want to get more details, you can always check on Google Maps at Akule Potato Farm. The spelling is already mentioned in the topic, so you can just type it on Google Maps and search. So on Google Maps, we've put up lots of pictures of the farm, and then we've also put up the guidelines and the details about the farm and the different seasons to visit the farm. So, for example, May to July, will you witness the hydrangea blossoms, and from April to May, you witness the blossoming of the potato flowers, and then from January to February, will be able to witness the cabbage, winter cabbages, and then in July to August, you'll be able to witness the summer cabbages. So during the winter season from November till February, you can witness how the cultivators they get their fields ready for cultivating the next phase of the potatoes and cabbages and then garlic like that. So do check out on Google Maps Sure. by typing the word Akule Potato Farm Kigoma, where you can get all the even minute details. Yes. So another thing is elder tree conservation and plantation. This is very important for us. So elder tree, I don't think we have the picture here, but elder tree is the official state tree of Nagaland. So
So one unique thing about alder tree is even if you cut down the tree, new branches, new shoots will come out within 3-4 months time, and then within 2-3 years it reaches maturity again. So it can be cut for you. It can be cut for use again and again by the community members. So we conserve those already existing alder trees, as well as we try to undertake plantation drives every year to especially to plant alder trees. So plantation and this conservation of alder trees is a very sustainable thing for us. So I think I've almost come to the end of my topic. So like I was saying, if you want to get further details, I'm sorry, I might not have just done justice to the topic, so bear with me for that. So to get further details, more proper details about the farm, kindly visit the Google Maps and check out the details as well as the location and plan your visit soon. And as a party note, I want to say to all the viewers, each one of us has an equal responsibility to make our planet Earth a better place to live in. So we can all do our best in whatever place, village, or city we are living in. So with that, I want to end my topic. So thank you, FES, for giving us this privilege and for giving me this opportunity to present our traditional and culture to the world. So on behalf of all Kigoma village, of all the members of Kigoma village, I extend my heartfelt gratitude to you. Thank you. Yeah, thank you, Tefukele, for the insightful presentation. Your story beautifully highlights how the community of Kigoma combines sustainable agriculture, strong local governance, water and biodiversity conservation, and traditional knowledge to manage the Akile potato farm. The recognition of the awards as well as the Northeast India Tourism Awards truly reflects the power of collective community stewardship. Thank you, Mr. Pira, once again for sharing these inspiring examples. Over to you, Shilpi. Yeah, we have a shot. Thank you so much, Mr. Fira. It was truly nice to hear about the initiative that you've taken. Just, please forgive me if I'm not able to do justice to how much you have shared with us, because I'll have a very short translation in Hindi for our members who have joined us. So फिरे जी हमारे साथ जुड़े हैं किगोयामा विलेज से, और वो हमको बता रहे हैं कैसे उनके गांव लोगों ने अब एक आलू का फार्म शुरू किया है, और वो फार्म उन्होंने जो अपनी कम्युनिटी के साथ शुरू किया है। पहले उनकी कम्युनिटी जैसे उड़ीसा में भी होता है, झूम होता है, वैसे नागालैंड में भी उनका होता है स्लैश एंड बर्न बोलते हैं, जहाँ पे आपको पता होगा कि वो फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करके वहाँ पे खेती करते हैं, फिर कुछ सालों के बाद फिर से वहाँ जाके खेती करते हैं। हमारे जो भाई उड़ीसा से जुड़े हैं उनको पता होगा कि कैसे झूम होता है उनके एरिया में, वैसे ही यहाँ पे भी उनका सेम खेती का स्टाइल होता है। तो उन्होंने देखा कि काफ़ी उनके साथी जो हैं वो इकोनॉमिकली उनके बहुत आजीविका में बहुत बदलाव नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, समुदाय में उन्होंने एक आलू का फार्म खोला है, जहाँ पे आलू के साथ-साथ लहसुन और कैबेज का भी खेती होता है, और इस खेती के दौरान उनके काफ़ी कम्युनिटी को हेल्प हुआ है, क्योंकि वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है, उनमें कोई भी बाहर के पेस्टिसाइड्स या दवाइयाँ लगाई नहीं जाती हैं, और उसके जो फार्म का पूरा जो गवर्नेंस है वो कम्युनिटी के हाथ के थ्रू से है। और इस फार्म से उनको ऑल्सो एक टूरिज़्म का एक फैसिलिटी मिला है, जहाँ पे लोग आते हैं उनको देखने के लिए कि वे ऑर्गेनिकली कैसे ये आलू और कैबेज ग्रो कर रहे हैं। तो उससे उनकी आजीविका भी बढ़ी है टूरिज़्म के साथ-साथ, और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से भी उनका काफ़ी लाभ हुआ है। और इसके उनके समुदाय के जो
ये एफर्ट्स है उनको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं और काफ़ी लोग दूर देशों से भी आके उनके फार्म को देखते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा हमको फिरे जी का स्टोरी सुन के और वो हम सबको उनके फार्म पे बुला रहे हैं कि हम भी जाके उनके फार्म को देखें और हम गूगल पे उनका फार्म के बारे में और जान सकते हैं। थैंक यू सो मच। Fire, we have a few questions for you as well. So we'd request if you can stay on till we come to the end of the question. When we reach the question and answer session, please. Please stay with Sure, us. sure. Yes. Okay, thank you. Thank you. Yes. Yeah, thank you so much. Thank you so much. We have our next presentation is from Orissa, titled Palki Gram Sapa, Reviving Commons for Food Security and Well-being. It will be presented by Mohan Bag and Alok Baji. Let's get to hear from them. Yeah, Shilpi. हमारा अगली प्रस्तुति उड़ीसा से है जो हमारे साथ जुड़े हैं आलोक जी और हमारे जो हमें सहयोग देंगे वो है शीतल हमारे साथ लास्ट ईयर भी जुड़े हुए थे और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है हमारे ये कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस से, तो हमें बहुत धन्यवाद करते हैं कि शीतल आप हमारे साथ जुड़े हैं और हम आगे मोहन जी और आलोक जी के स्टोरी के बारे में सुनना चाहते हैं। ओवर टू यू। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हमारा जो आज का प्रेजेंटेशन है, हमारे पालकी ग्राम सभा से 3 सदस्य आपके साथ मौजूद है, गदन माझी, आलोक माझी और मोहन जी। तो ये तीनों अपना जो अनुभव रहा है, देयर एक्सपीरियंस दैट दे विल शेयर विथ यू एंड मुझे ये मौका मिला है कि मैं थोड़ा बहुत इसको ट्रांसलेट कर पाऊँ आपके लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गदन जी को बोलूँगा कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे टू हुएवर हु इज मैनेजिंग द स्लाइड्स। आप धीरे धीरे करके स्लाइड्स जो प्रेजेंटेशन है उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। द स्लाइड्स आर टेंटेटिव, दे विल टेल यू अ स्टोरी, not exactly what they're saying. So that will make my job easier to present. And I won't say you to change the slide. You can just proceed on your own, and that's fine. Thank you. Over to Gadanji. Sir. थैंक यू। नमस्कार, मोर नाम है गदन माझी, पालकी ग्राम सभा संपादक अच्छे अरे पंचायत भट्टीगढ़, ब्लॉक लांजीगढ़, कलाहांडी जिला। आमर 2019 रे बैठक होइतिला। बैठक बसिथिलु मिनिमम 50 ରୁ 60 महिला बसिथिले, 40 ର जेंट्स बसिथिले। तो 2019 रे जेंता मीटिंग कलु तापरे गला बेले सेतिरे आमे जानि पारलु जे किछि भी न जानि ताई जे ग्राम सभा केंतिरा बोली करी। तापरे आमे जे कि नक्ति पदर कि जन खाता पदर कलु। तापरे 3-4टा बैठक बसलु। बैठक बसी करी तापरे जेते बेला आमे बैठक बसला पर वन विभाग के ना कौन सी विभाग भी हो ना 8-9टा विभाग के चिट्ठी पत्र कलु। 2023 तो 23 रे हमर बिक्री आरंभ होला। सेटा सेटा हम खाली 500। मोहन जी थोड़े से जोर से बताएंगे या थोड़ा सा पास आ सकते हैं आप? हाँ, गदन सर प्लीज। हाँ, जोर को 2023 रे हमर बाउंस लगे हम ये नक्ति कर देलु। चिट्ठी पत्र भी बाहर बाहर कलु 3 वर्ष तक केनकी केन विभाग की भी से हमके सुनिले नहीं कि सुबिले नहीं। सेटा लगी हमें ग्राम सभा रे गुटे छात्र बैठक बसा हैला। बैठक बसी करी तापरे आगु तमर परिचित अधिका खराब थिला। केनता कि केन खाइबा लागि विधान नहीं मिलुता कि कौनसी पिन्हवा लागि गुटे कि कपड़ा गुटे भी भलटा मिलु नेतिला से बोलिया चलितिला हमर 2019 रु आके। जेंतु को 2023 रे गुटे ग्राम सभा गुटे बैठक कलु जेंता कि गुटे चलिला मोटा व्यापार
ସେଠାରୁ ଗୋଟେ ବେପାର ଚାଲିଲା ପରେ ଆମର ବି ଟିକେ କିସ୍ମତ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଯେ ଇ ବାଟକେ ଚାଲିଲେ ଠିକ ହେବା ବୋଲିକରି ଆମେ ବି ନାଇଁ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତିଟା ଠିକ ଅଛେ ଯେନ୍ତା କି ଆମେ ବିକ୍ରି କରଛୁ ବଂଶକେ ଏବେ ବିକ୍ରି କରଛୁ ସେଟା ବି 6 ମାସ ଜୁନରୁ ଜୁଲାଇ ठीक है ଜୁନରୁ ଜୁଲାଇ ତକ ଆମର 6 ମାସ ବେପାର ହେଇଛି ସେଥିର ବେପାର ଆମକେ ମିନିମମ୍ ବି ଗୋଟେ ବର୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷ 25 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେପାର ହେଇଛି ସେଠି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଏବେ ଖାଇବା ଲାଗି ବି ମିଳୁଛି ଏବେ ତାପରେ ଯେତେ ଦାଦନ ଖଟୁଥିଲେ ସେ ଖଟବା ନାଇଁ ନା ଯାଉଥିଲେ ବାହାର ଦେଶକେ ଏବେ ନିଜେ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କାମ କରି ନିଜେ ତାକର ମାନେ ଏବେ ପୋଡ଼ ଚାଷ ବି କରୁଥିଲେ ଆଗୁ ପୋଡ଼ ଚାଷ ଏବେ କରବା ଲାଗି କମିଗଲା ନା ତାପରେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲକେ ସୁରକ୍ଷା ରଖବା ଲାଗି ବହୁତ ସେମାନେ ସଚେତନ କରୁଛେ ତାପରେ ସେମାନେ କେନ୍ତା କି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବି କେନ୍ ଖଡି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ କେନ୍ ବାଉଁ ହାଣି ଦଉଥିଲେ ଏନ୍ତା ବେପାର ବି କରୁଥିଲେ ଆଗେ ଏବେ ସେଟା ବି ଏବେ ନାଇଁ ନା ଯେନ୍କି ଏବେ ଯେନ୍ତା କି 2006ରୁ ଆଇନ ଧରି କରି ଏବେ ଚାଲୁ ହେଲା ସେଠୁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଇନକେ ଧରିକରି ଆମେ ଚାଲିଛୁ କି ଆମେ ଏଇ ବାଟକେ ଗଲେ ଠିକରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଆଗକେ ବଢ଼ି ପାରମା ବୋଲିକରି ଆମେ ସବୁ ଏଇଟା ଲାଗିଛୁ ତାପରେ Hello, and so we will move on to the next part of our presentation. Alok ji, who is the current secretary of Palki Gram Sabha, he will be presenting his views. Thank you. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପାଲକି ଗ୍ରାମ ସଭାର ଆସିଛେ ପାଲକି ଗ୍ରାମ ସଭାର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା ଭର୍ତ୍ତିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଆଉ ଏବେ ଆମ ଗ୍ରାମ ସଭା ହେଲା ଦିନ ଆମ ଗାଁଟିରେ ଭଲରେ ଲୋକ ବି ଦାଦନ କଟି ଯାଉଥିଲେ ଏବେ ନାଇଁ କଟି ଯିବାରନେ ଆଉ ଘରେ ବି ଲୋକମାନେ ବି ରୋଜଗାର ଭଲ ହିସାବରେ ପାଉଛନ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ତ ବାଁଶ ଯଦି ଭଲସେ କାଟିବେ ବୋଲେ ମିନିମମ୍ ବି 6 ମାସ ଭିତରେ ଆମର 30,000 40,000 ପାଇଯାଉଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ଏବେ ଦାଦନ ବି ନାଇଁ କଟିଯିବାରନେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ବି ସୁରକ୍ଷା କରୁଛୁ ଯେନ୍ଟାକି ବାଉଁଶର ବୁଦାକେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ମାଟି କ୍ଲିନ୍ ପକାଉଛୁ ସେଟା ବି ଆମର ପୁରୁଷ କି ମହିଳାକେ ସେମ୍ ପଇସା ଦିଆହେଉଛି ଦିନ ବୋଧେ 300 ଲକ୍ଷ ଦିଆହେଉଛି ସେଟା ଗୋଟେ ସେଥିଲାଗି ଏମିତି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ ଏବେ ଲୋକ ବି ବାହାରକେ ଦାଦନ ନାଇଁ କଟିଯିବାର Now the last part of our presentation, मोहन बाग जो कि हमारे लांजीगढ़ ब्लॉक के ग्राम सभा महासंघ के सेक्रेटरी है मोहन बाग who is the secretary of Lanjigarh block Gram Sabha Mahasangh. He has been a part and parcel of the progress and development in Palki. वो पालकी के जो भी काम है उसके सहभागी रहे हैं और वो अपना इस सफर में उनका जो अनुभूति रहा है his experience he will share with you and Pranali ji, after he speaks for a while you can switch to the next slide. Thank you. Oh. No, after he speaks, yeah. Mohan ji. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଜି ଅଧିବେଶନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଯେତେ ବି ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ सबके मोर शुभेच्छा अभिनंदन मोर नाम मोहन बाग लांजीगढ़ ब्लॉक संपादक रूप रे काम करूछे आउ आज किछि पालकीर किछि हमर कहानी उपरे
ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେବା ଲାଗି ମୁଇଁ କିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଯିମି। ତ ପାଲ୍କି ଗ୍ରାମ ସଭା ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଗାଁ ଯେନ୍ଟା କି 2018 ପୂର୍ବରୁ ତାର ପରିସ୍ଥିତି କାଣା ଥିଲା ଆଉ ଏବର ଡେଟ୍ରେ କେନ୍ତା ଅଛେ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଇଁ କିଛି କହିବି। ତ 2018 ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଏନ୍ତା ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା କି ସେମାନଙ୍କର ନା ରାସ୍ତାଘାଟ ନା ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି କି ତାଙ୍କର ପରିବେଶକେ ନେଇକରି ବି ବହୁତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ଚଲୁଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନର ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗ୍ରାମସଭା ଗଠନ କରାଗଲା, ପାଲ୍କି ଗ୍ରାମସଭା 2019ରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମସଭା ଗଠନ ହେବାର ଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରେଡି କରୁ କରୁ 2021ରେ ସେମାନେ ଗ୍ରାମସଭା ଗଠନ କଲେ। ଆଉ ଏଫଏମସି କମିଟି ଗଠନ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ଯେତିକି ତାଙ୍କର 1000 ଏକର ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ମାନେ ବହୁତ କମ୍, ଯେନ୍ ମାନେ କି ତାଙ୍କର ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ଅଛନ୍, ଛୋଟିଆ ଗାଁଟେ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର 68। ସେ ଯେନ୍ ଛୋଟିଆ ଗାଁର ଲୋକ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଥିଲେ ବାହାର ବିଦେଶକେ ଯାଇକରି ସେମାନେ ଚଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ତ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛେ। ତ ଗ୍ରାମସଭା ଗଠନ କଲା ପରେ ତାପରେ ଗାଁରେ ରୋଜଗାର ପାଇଲେ, ବାଉଁଶ ବିକ୍ରୟ କଲେ ପ୍ରଥମ କରି ଆମର 2021ରୁ। ସେମାନେ ବିନା ପରମିଟରେ ନିଜର ଗ୍ରାମସଭାର ପରମିଟରେ ସେମାନେ ବାଉଁଶ ବିକ୍ରୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଗାଁରେ ରୋଜଗାର ବି ପାଇଥିଲେ। ଆଜି 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ 20 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏବେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାଘାଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲା ଛୁଆ ପଢ଼ବା ଲାଗି ଇ ସବୁ ସୁବିଧା ବି ନେଇ ହେଇପାରୁଥାଏ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବେଶ ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛେ। ତ ସେମାନେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ମାନେ ନିଜର ଜଙ୍ଗଲର ଯାହା ବି ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍, ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ବି ଦଉଛନ୍। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯାହା ସେମାନେ ଆମର ସେ ବାଉଁଶ ବିକ୍ରୟ କରିକରି ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍। ଦାଦନ ଖଟି ଯିବାର ଠାରୁ ବି ସେମାନେ ଏବେ ମାନେ ଏତ୍କି ନେଇ ଯିବାର, ଆଉ ଏବେ ନିଜର ଗାଁକେ ସେମାନେ ମାନେ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିଛନ୍। ଆଉ बस Can you धन्यवाद। please play the video? Yeah. This is a video file. Yeah. If you can play this. हमें 2 मिनट दीजिए, हमारी टीम कोशिश कर रही है। मोहन जी, आपने बहुत बढ़िया बताया, थैंक यू। गगन जी और आलोक जी। All of us are very impatient to share the story, so everyone is pitching in. Yes, Hope that's fine. yes, it's very good to hear. If I may, meanwhile, I can just summarize in a short period of time Yes, what please. the discussion was. Yeah. Yes, please. Eh, आप हिंदी में समझा सकते हैं। हाँ, मैं हिंदी में बोलूंगा। तो हम जिस ग्राम सभा के बारे में बात कर रहे हैं वो लांजीगढ़ ब्लॉक के भुट्टीगढ़ ग्राम पंचायत के अंतर्गत पालकी नाम का ग्राम सभा है। और इसमें 68 परिवार है, जिनमें से बस
4 से 5 परिवार के पास या फिर 3 परिवार के पास जो हम कल्टिवेबल लैंड बोलते हैं, जहाँ पे इरिगेशन या पानी रोकने का समस्या मतलब समस्या ना हो, वैसा जमीन है जिसको हम एग्रीकल्चरल लैंड बोलते हैं। और बाकी लोग जंगल के ऊपर ही भरोसा करते हैं अपने दिन प्रतिदिन का जो खाने का है या पहनने का व्यवस्था है या जो भी आपका इनकम का सोर्स है, वो जंगल से ही आता है। 2018 में पालकी ग्राम सभा को जंगल अधिकार आइन 2006 के तहत, जंगल अधिकार नियम अधिनियम 2006 के तहत इनको सामुदायिक वन अधिकार का जो सिरोनामा है, जो टाइटल है, उनको मिला। लेकिन गांव के लोग इससे वाकिफ नहीं थे। तो कड़ाहंडी ग्राम सभा महासंघ, जो कि कड़ाहंडी जिला में ग्राम सभाओं का समूह है, उनके सहायता से पालकी ग्राम सभा ने 2019 में पहली बार अपना ग्राम सभा का गठन किया, CFRMC कमेटी बनाया, जो सामुदायिक वन संरचना कमेटी होता है। और बनाने के बाद उनको करीबन 4 साल लगे 2023 तक, जब वो प्रशासन के साथ, शासन के साथ, सरकार के साथ बातचीत में रहे कि उनको अपने गांव में जो भरपूर बांस का जंगल है उससे वो सस्टेनेबली हार्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या जिला प्रशासन हो, इनके पास से कुछ भी उनको खबर या सहायता नहीं आया। तो 2023 में पालकी ग्राम सभा ने खुद का ट्रांजिट परमिट जंग वन अधिकार अधिनियम और उसके संशोधित नियम 2012 के तहत, सेक्शन 21 के तहत उन्होंने अपना खुद का ट्रांजिट परमिट प्रिंट किया। और मेरे जानने के हिसाब से नॉन पेशा एरिया में पहला ग्राम सभा है जिसने खुद के ट्रांजिट परमिट से बांस की जो हार्वेस्ट है और उसका जो ट्रेड है, जो उसका विक्रय है, उसको किया। और उसके बाद से करीबन पिछले 3 साल से 2023, 24 और 25 में पालकी ग्राम सभा ने सालाना 16 से लेके 24 लाख तक बांस के जो कटाई से उन्होंने इनकम किया है। और इससे जो परिवार है जिनके पास कृषि का कोई माध्यम नहीं था, संसाधन नहीं था, उसके वजह से उनका जो सर ने बोला है, उसके वजह से उनका फूड सिक्योरिटी माने खान पान का जो व्यवस्थापन है वो हो पाया है। हाँ, आगे तो पहले उनका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, पोडू चाष जिसको हम बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न, वो हुआ करता था। अभी उसका धीरे धीरे घटना शुरू हुआ है, क्योंकि अगर कोई 6 महीने के लिए जो बांस का सीजन होता है उसमें कटाई रेगुलरली करे, तो 6 महीने में वो 30 से 40 हजार रुपए तक खुद के गांव में कमा सकता है। और ये वो ग्राम सभा है जिसमें पिछले 4 साल से MGNREGA का काम नहीं हुआ है। तो जो पलायन का, देशांतर का था, डिस्ट्रेस माइग्रेशन का जो प्रक्रिया था, वो भी कम हुआ है, क्योंकि आपको अक्टूबर से लेके जुलाई के महीने तक अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एंड ये वजह है कि पालकी ग्राम सभा के लोग करीबन 26 से 25 लाख का जो उनका रेवेन्यू है उसको मैनेज कर पा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने 9 लाख का फिक्स डिपॉजिट किया है, जो अपने सेविंग्स ग्राम सभा का है, खुद का जो राजकोष है वो अब उन्होंने बनाया है। और अगले दिनों में वो जंगल में कैसे तरह तरह का इन्वेस्टमेंट हो पाए, जैसे टर्मरिक फार्मिंग, जैसे फ्रूट्स का प्लांटेशन, हल्दी का चाष हो, या तरह तरह का फल हो सके, ताकि जो एलिफेंट्स के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट है आज के डेट पे बैम्बो को लेके, या फिर अपने ग्रास जो अपने छोटा सा एग्रीकल्चरल प्लॉट्स को लेके है, उसको कैसे कम कर सके। इसीलिए वो एक फूड बैरियर बनाना चाहते हैं। हमने उसको प्रेजेंटेशन में नहीं देखा था, बट सर के मुंह से निकला तो मैं सोचा बोल ही देता हूँ। और ये पालकी का जो अनुभव है, ये हमारे पालकी के जो पहले प्रमुख थे गगन जी, अभी के सचिव आलोक जी, और उनके ब्लॉक के सेक्रेटरी मोहन बाग जी ने बताया है। आई होप दैट द वीडियो इज नाउ अप। या दैट्स फ्रॉम माय साइड, आवर साइड रादर। या
सॉरी शीतल, हमारे पास वीडियो एक्चुअली चल नहीं रहा है। क्या आप शेयर कर पाएंगे आपके सिस्टम से? I think I'll try. Just the president couldn't make it today, and we thought it would be good to share the video. Yes, Could yeah, you you can give try. me Yeah, you yeah can please try. Till then, just a minute? Yeah. would you be able to give a short brief in English? I could also do it, no problem. So Yeah. Yeah. Please help me out there. I'll fix this. yes, sure. So today we've been joined from Odisha, from the Palki Gram Sabha, with Mohanji Garanji as well as Alok, and they are talking about how the Gram Sabha has been able to ensure that these forest-dependent communities are able to exercise their community governance over their forest lands. They have taken up they have reduced the dependency on Podu chas, which is the shifting out cultivation or jhum cultivation in their areas, and have taken up the cultivation of bamboo. And through bamboo harvesting, they have seen how these sustainably harvesting the bamboo, they have been able to generate a significant income in their community. Their annual income has been almost 16 to 26 lakhs, which has helped to support their livelihoods and also significantly reduced migration from their villages. This increase in income has helped to uh, make sure that the community members have secure food security, because they are now able to invest the money which they are receiving through this bamboo cultivation in other avenues, in other cultivation like fruit fruit harvesting, as well as also their accessibility to medical facilities has improved significantly. Just recently, they've also managed to create a fixed deposit for their community of 9 lakh rupees, where because through this income that they have got through bamboo harvesting. The Gram Sabha has taken collective action to make sure this entire initiative has been done, and it is really commendable to see this collective action towards this purpose. So that forest-dependent communities are now able to ensure that their livelihoods are supported through this forest produce. सो बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, आलोक जी और दादन जी, आपने हमारे साथ जुड़े और आपके जो पालकी ग्राम सभा के बारे में बताए। Sital, will you be able to show it now, or we could also do it later? I think I can. Is my screen visible? Yes. Yeah. हमारे साथ अभी शीतल जी उनके प्रेसिडेंट के बारे में जो जुड़ नहीं पाए थे, उनका संदेश सुना रहे हैं। शीतल, हो पा रहा है क्या आपसे? हमें आपका प्रेजेंटेशन दिख रहा है बट वीडियो नहीं। Give me 1 second, yeah. हाँ जी। Take care of. Is the presentation visible now? Yes, it's coming now. Now? The audio is not on. Was it not visible? We could see the video but not the audio. Okay.
Now? Could you play the video? I don't think the video is playing. Apologies for taking up the time. No, it's okay. Yeah, maybe I can just say what he said, but Yes, please. I think most of it was covered with three of them speaking. So, yeah, thank you so much for the time and Dhanyavad. space, and Dhanyavad. thank you, Shilpiji, for your encouraging words. Please stay with us. We have a few questions. आलोक जी और मोहन जी आपके लिए कुछ सवाल है जो हम क्वेश्चन आंसर सेशन में लेंगे, तो आप प्लीज हमारे साथ जुड़े रहें। हम अगले प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं जो कृष्णमा गारू हमारे साथ जुड़ रहे हैं आंध्र प्रदेश से। वो हमारे साथ शेयर करेंगे अपनी कहानी नकलावारी कोटे के बारे में, जहाँ पे वो बिकी फ्रूट्स के बारे में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। We now have Krishnamma, who's joining us from Andhra Pradesh, from Nakalavari Kota, and she will be sharing with us her story and how they've been collecting bicky fruits to help their to sustain their food security. We are also joined with Lata, who will help us with the translation. Namaste, Krishnamma Garu. నమస్తే Please take 10 on. కోట గురుమార్పల్లి పంచాయత్ అన్నమయ్య జిల్లా మాది. మాకు బిక్కాలు. Can you change the slide, please, Pranali? మాది 40 ఇంటిపల్లి మేడం. మాది 40 ఇండ్లు. మేము ఒకటే వ్యవసాయం చేస్తాము. గొర్రెల సేద్యాలు చేసేది, కాయలు ఇవేది, బిక్కాయలు తీస్తాము. మాకు అందుబాటు అయిన కాయలు తీస్తాము, అమ్ముతాము. అయ్యే ఇంకా వాళ్ళనే తావకొస్తే అమ్ముకొని మా జీవనం గడుపుకుంటున్నాం. Next slide, please. మల్లయ్యకొండ, చాదుగుండ, మినుంకొండ, ఆ కొండ కాపాడుకొని అక్కడ కాయలు తెచ్చి ఇక్కడ అమ్ముతున్నాం. పరక గోసులు, పరకట్టులు, చేపలు అట్లాంటివన్నీ తెచ్చి మేము అమ్ముకుంటాము. మేము ఊరికి పోయి ఒక ఊర్లోకి పోయి అమ్ముకొని వచ్చి మా జీవనం గడుపుకుంటున్నాం. ఆ జీవనమే మా పిల్లల మేము సాకేదానికి డబ్బులు ఆదాయము దాంతో బతుకుతున్నాము. ఏమేం పంటలు తెచ్చుకుంటారు అక్కడ నుంచి? బిక్కాయలు తెస్తాము, ఈతకాయలు, పుల్లింజకాయలు, అట్లా కాయలు ఎత్తుకొస్తాం. ఆ కాయలే మాకు ఆధారం. అక్కడ నుండి తెచ్చుకోవటం, అమ్ముకోవటము, మా పిల్లలు సాగటము. ఈతకాయలు బియ్యానికి అమ్ముతాము, పుల్లింజకాయలు డబ్బులకు, బియ్యానికి అట్లా అమ్ముతాం. అవి అమ్ముకొని మా పిల్లలకు డబ్బులకు అమ్ముతాము. ఆ కాయలు పలాని కాయ అంటే ఋతుకోసిన కాయ పెరుకుతాం. పచ్చిగా నేతగా ఉంటాయి దాంట్లో. ఆ కాయలు వదిలేస్తాము. మన బనుకొచ్చే కాయ మటుకు తెచ్చుకుంటాం. తెచ్చుకొని అమ్ముకొని పిల్లలకు మాకు సౌకర్యంగా చేసుకుంటాము. డబ్బులకు అమ్ముతాము, బియ్యానికి అమ్ముతాము. డబ్బులకు అంటే పిల్లలకు చదువుకునే దానికి మాకు చింతకంట ఖర్చులకు మేము పెట్టుకుంటాం. పిల్లలకు అది చేస్తాం. బియ్యము మాకు అన్నానికి తెచ్చుకుంటాం. ఈ రేస్ బియ్యం వస్తాయి, నెలకు ఒక తూరే వచ్చేది. మాకు నెలకు ఒక తూరు వస్తే మాకు ఆ బియ్యము సరిపోవు కాబట్టి ఈ బియ్యము అవి సరిపోతాయి. అక్కడ సరిపోయిన కాడికి మాకు జీవనానికి మాకు సరిపోతుంది. ఇంకా ఆ ఈతకాయలు తెస్తే ఈతకాయలు అంతే. ఈతకాయలు డబ్బులకు, బియ్యానికి
అన్ని తెచ్చి అమ్మటానికి ఇచ్చాము. అవి ఇట్లే పిల్లలకు మాకు సరిపోయేగా తెచ్చుకుంటాం. అడవి అగ్గి పొడి కన్నా కట్టెలు ఏదికి పచ్చికట్లు కొట్టుకైనా ఒట్టికట్లు తెచ్చుకుంటాము, అమ్ముకుంటాము. ఇట్లా పల్లెలకు పోయి ఇట్లా కలిచిట్లా ఇట్లా పెదమండము ఇట్లా తురుపల్లి అట్లా పోయి అమ్ముకొచ్చుకుంటాం. ఇట్లా పల్లెలు లేకల్లా అట్లే కోటకాడపల్లి, గురుమాలపల్లి అట్లా పల్లెల్లో అమ్మేస్తాం. బియ్యానికి డబ్బులు కంటే టౌన్కి వచ్చి అమ్ముకుంటాం. బియ్యంకు టౌన్లో బియ్యానికి వేస్తాము, మళ్ళా డబ్బులకి ఇస్తాము, అన్నిటికీ ఇచ్చి మేము తెచ్చుకుంటాము. ఆ ఉపాయం ఉంటుంది మాకు. దీనిలకు దానిలకు వేయకన్నా మా పిల్లలకు మాకు తెచ్చుకునేది ఆధారం. మేము ఆ ఆధారాన్ని చూసి బతుకు. మేము పిల్లలు సాకాలంటే కొండకి వాళ్ళ కాలితే వల్ల మా బతికి తీరానికి మేము బతికేదానికి అన్ని తెచ్చి పెడితే మాకు ఆదాయం. అదే ఆ కొండను చూసి బతకల్లా మేము. ఇట్లా కరువు పనులు చేస్తాం అడవిలో. కరువు పనులు అన్ని దానితోనే మాకు ఆధారంగా బతుకుతున్నాము. ఏమంటే ఒక బిడ్డలకు పిల్లలకు సంపాదన అంటే కాయలు పాడు తెచ్చుకోవటము, పెట్టుకోవటము. అట్లా పెట్టుకుంటే ఒక డబ్బులు పెంచుకుంటే ఒక బిడ్డను ఒక పిల్లల కూతురుని చేసి చంపించచ్చు ఆడబిడ్డను. మగ బిడ్డకి అయితే సంపాదించచ్చు, అందరం కలిసి సంపాదించి ఆ కాయలంటే తెచ్చి పెట్టచ్చు. మేము దానికోసం అయ్యి ఈ ఆధారం చేశాను. ఏమంటే మన బతికి తీరానికి ఎట్లా సట్లు పడాలంటే అట్లా బాధలు పడతా అండి. మేము ఆ కాయలు కొండకు మల్లయ్య కొండకు, చాదగొండకు, ఎన్ని కొండకు 3 కొండలు తెచ్చి ఆ కొండలు కాపాడుకుంటా పచ్చికట్లు కొట్టుకన్నా ఒట్టికట్టి తెచ్చుకునేది ఆ ఆధారం చేస్తాం. ఆ కాయలు అది ఋతువుకి వచ్చిన కాయ అయితేనే తెచ్చుకునేది. ఆ కాయలు ఋతుకు రాకనంటే బిక్కాయలు అయ్యి ఆ బిక్కాయలు బాగా ఆ చెట్టుతో పెరిగినప్పుడు పడితే పుండు మాత్రం మాగిపోతుంది. ఆ పుండుకు తెచ్చుకుంటేనే మనకు అమ్మటానికి. అట్లా పచ్చిగా ఉంటే అది రేపు వారము రేపు నెలలో కానీ వస్తుంది మనకు అనుకుంటే ఆ ఆధారం అట్లే పెట్టేసి ఈ కాయలు తెస్తాము. లేకపోతే మేము ఆడవాళ్ళము అలా పనులు చేసి అట్లా తెస్తాం. ఏమంటే మనకు మగవాళ్ళు అంటే ఏదో ఓ రోజు పోతామంటారు. లేకపోతే మేము ఆడవాళ్ళం అదే 40 ఏళ్ళ పల్లి మాది. 40 ఏళ్ళ వాళ్ళము అట్లనే జీవనం చేస్తాను. అది కొందరము అంటే అందరూ మొత్తానికి అర్థానికి అర్థం పోతాము, అర్థానికి అర్థము ఇప్పుడు రేపు పోతారులేని అట్లని అనుకుంటారు. లేకుంటే అందరూ దాని మీదనే ఆధారపడాలి. ఆ కాయలు తేవాలి, అమ్ముకోవాలి, తినాలి. బియ్యానికి కొంచెంకి డబ్బులు కమ్ముతాము, కొన్ని బియ్యం తీసుకుంటాము. అట్లా ఆధారంగా బతుకుతున్నాం దానిపైన. ఇంకా ఉల్లించగాలని మా ఉల్లించగాలంతే కొండకు పోవాలా తేవల్లా. అవి చెట్లలోనే మాగిపోయింటాయి. అవి పచ్చికాయ పెరకన్నా పుండికాయలు ఎత్తుకొచ్చుకోవాలా. ఆ పుండికాయలు తెచ్చి మనం ఈ ఊర్లో అమ్ముకొని మళ్ళా పోవాలి. అట్లా మాది ఆ కొండని కాపాడాలంటే అది కాయలు ఏది అగ్గు పడకన్నా దాన్ని కాపాడుకుంటే మాకు ఆధారం పడుతుంది దాని మీద. లేకుంటే అట్లే ఉండిపోయినామంటే కాలిపోయినాయంటే మాకు ఆధారమే చిక్కదు. కాయలు కాలిపోతాయి, పండ్లు కాలిపోతాయి. అప్పుడు ఏం చేయాలి మేము? అప్పటికి ఏం పని చేయలేటమే ఏంలే. ఏదో బయట పనికి పోయినామనుకో మళ్ళీ ఆధారంగా కొండకే మేము ఆధారం చేయాలి. ఆ కొండలో ఏం తినేటివి తెచ్చుకోవాలా, ఊర్లో అమ్ముకోవాలా, పోవాలా. అట్లాంటివి మాయి. ఏంటంటే అది బతికి ధీరంగా బతుకుతున్నాం మేము అక్కడ. Thank you, Krishna Garu. థ్యాంక్ యూ మేడం. Prasanna, we'd request you to please translate. Yes. Thank you, Krishnamma Garu. And it's a wonderful to listen. And I'll just quickly translate it into English. So, Krishnamma is a vice president of Nakalwarikota village, and she has been part of the village institution since so many years. And there are 45 families in the Nakalwarikota village. And their main source of income is agriculture and
livestock rearing and NTFP collection. And there are 45 families in the Nakalwari Kota village. All the families used to collect NTFP. And some used to sell, and some used to sell it for the money, and some used to sell it for the, like she already mentioned that they use a barter system, like exchanging with the rice. So as Krishnamma mentioned that they depend on the forest produce a lot since years. Not just them, their grandparents have also been, it's been like whatever the point she forgot, I will also mention those. It's been 100 to 150 years. Their grandparents also depending on the forest for years, and they all learned from their grandparents that which are the edible fruits, and the knowledge they gain from their grandparents, which fruits, which tree yields good fruits. And she also mentioned that they used to go to the Malay. They have 3 hillocks in their adjacent to their villages: Malaikonda, Inukonda, and Sadhukonda. They used to go for picking those bicky fruits in early mornings. And she mentioned that most of the women go to pick the bicky fruits, and very less number of men go. So it is like a collective action among discussion among the women in the village. So they used to go and pick the fruits, and they used to sell in the nearby markets, nearby villages, in schools, and nearby wherever people are there. So they used to sell it for the money and like a barter system. And she mentioned that since they are getting rice through PDS system, but also they are selling it for the rice, because the whatever the quantity of rice they are getting from a PDS system, that is not sufficient to meet the needs of the family. That's why they are selling it for the rice also, and it's been continuing since from years along with their grandparents. So she's saying that with the money that she got from selling bicky fruits, the money helped to get marry her children also. And so they used to sell, there is a quantity that they used to sell. So they used to sell one pot of bicky fruits, exchanging with the one pot of rice. And she also mentioned that they used to pick a sustainable harvesting in the forest, and they have also done a lot of restoration works along with the MGNREGS. And they have always been protecting their forest because that is the source of livelihood for them. So they used to control the fire with the collective action among the community through village institutions. And they were also balancing the ecosystem in their own forest. And in the end, she also mentioned that women has been part of this journey. They were the strong key role they played in this village. Not just this village, there are a lot of other villages adjacent to those hillocks that have been involved, mostly women. So this is the source of livelihood for many women, and that is helped a lot of women to meet their family needs, and to make their child go for education. And like I already mentioned, that helped to get married, fund for other things as well. Yes. That's all. So, and she also mentioned that there is, if there is no forest, there is no us. So she has been saying that to me. So I just want to mention that is their life, she is saying. Yeah, that's it. Thank you. Thank you, Prasanna. Thank you, and as well as Madam, for the beautiful presentation. The story of Krishna Nama and the woman of
that mentioned shows a deep connection between the communities and the forests. What we understood was through generations of knowledge, the sustainably collected forest produce like the bicky fruits, and even with, I see pictures, like even with mates for extra income. Very powerful. And the system of exchanging the biggie fruits for rice is a powerful example of how forests directly support food security. What stands out is the responsible harvesting. Their respect to the ecosystem and how the forest-based livelihood keep the community strong. Thank you, Madam, once again. Bahut shukriya, and thank you for bringing this inspiring story of resilience and common women's leadership to us. Yeah, Shilpi, over to you again. कृष्ण गारू, धन्यवादಗಳು. Thank you. आपका कहानी हम सब ने सुन के बहुत अच्छा लगा और आपने दिखाया कि महिलाएं कैसे आगे बढ़ रही हैं और अपने समुदाय में कैसे वो इस आजीविका को अच्छे से बढ़ा रहे हैं. तो कृष्णा जी बता रहे हैं कैसे उनके गांव में फॉरेस्ट से वो लोग एक बेर जैसे कलेक्ट करते हैं, जैसे हम नॉर्थ इंडिया में उसको दिकामानी बोलते हैं या घोघर कहते हैं, उसको वो कलेक्ट करके बहुत उससे उनका आजीविका को सपोर्ट मिलता है और वो अपने इन बेरों को कलेक्ट करके उसके बदले में चावल भी लेते हैं और इससे उनकी आजीविका काफी बड़ी है और वो जो उन्होंने आय किए है उससे उनको काफी सपोर्ट हुआ है. उनके घर में अगर कोई शादी है या कोई बीमार है तो इस पैसे से उनको काफी सपोर्ट मिला है. कृष्णा जी फिर हमें बताते रहे हैं कि ये सारे उनके गांव की महिलाएं सिर्फ करते हैं और अभी भी महिलाएं को ये सपोर्ट मिलता है कि ये कलेक्शन जो उनके कलेक्शन करते हैं उनको काफी आजीविका में सपोर्ट मिलता है. धन्यवाद कृष्णा जी, आपके बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे साथ ये साझा किया. आपके लिए कुछ सवाल है जो हम अगली प्रेजेंटेशन के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उनमें लेंगे. आप प्लीज जुड़े रहिए हमारे साथ. हम अगले प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे जो हमारे साथ जुड़े हैं कर्नाटका से. कलाकल जी जो हमारे जुड़े हैं कर्नाटका से, उनके साथ है भीम नायक जी जो हमें मदद करेंगे ट्रांसलेशन के लिए. Thank you so much. We have our next presentation is from Karnataka, titled Strengthening the Tribal Economy with Sustainable Forest Produce Trade. It will be presented by Kara Kalkar. Let us warmly welcome them as they share the presentation. Over to you, Karnataka team. Okay, sir. Thank you, sir. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭೀಮ್ ನಾಯಕ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು FSNS ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ನಲ್ಲಿ HD ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ HD ಕೋಟೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘವನ್ನು ನಮ್ಮ HD ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾಲಕಲ್ಕರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಘ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಘದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳೇನು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಮುದಾಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಏನೇನು ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಿರು ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಏನೇನ ಇತರೆ ಒಂದು ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾಲಕಲ್ಕರ್ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾಲಕಲ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ಕಾಲಕಲ್ಕರ್ ಅವರೇ, ಹೊರಟು ಸರ್, ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಿಮ್ದು ಪರಿಚಯ ಕೊಡಿ ಸರ್. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಮಾತಾಡಿ, ನಿಮ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹೆಸರು ಕಾಳಕಲ್ಕರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಗಿರಿಜನರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಇದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅರಣ್ಯ ಮೂಲ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಬೆಟ್ಟ ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದವನು ನಾನು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥವರು 1972 ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. 1965ರಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರ ಸರ್ವೋನ್ಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘವನ್ನ ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಜನಾಂಗದವರು ಅಲ್ಲ, ಜೀವಿಸಿದ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಲ್ಲ. ಆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಭಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಳುಗಳಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಬಂದವರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತು ಇದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ 70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಬೈಲಾದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಗಿರಿಜನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಲ್ಯಾಂಬ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬೈಲಾದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಸಂಘವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11 ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತದೆ. ಆ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನೆಲೆಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 11 ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇರಿದಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದರದ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಟ್ರೈಬಲ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನುದಾನಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸೊಸೈಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಸುಮಾರು 90 ಜೇನುಕುರುಬ ಆಡಿಗಳು, ಸೋಲಿಗರು, ಎರವರು, ಬೆಟ್ಟ ಕುರುಬ ಜನಾಂಗದವರು ಈ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ದಾರರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಮೇಣ, ಬೆಟ್ಟದ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಸೀಗೆಕಾಯಿ, ಅರಳೆಕಾಯಿ, ಸರ್ಪಗಂಧ, ಪರ್ವತಕಾಯಿ, ಜಟ್ರೋಪ್, ಕಾಡ್ಸುಂಠಿ, ಮರದ ಪಾಚಿ, ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಋತುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಗಾರರಿದ್ದಾರೆ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ತೂಕದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅವರಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ ಇದೆ, ಆ ಫೆಡರೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯೂನಿಟ್ಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಈ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ನಾವು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಸೇರ್ದಾರರಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 13 ಅರಣ್ಯವಾಸಿ ಕಾನೂನು ಆಡಿಗಳಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅಡೆತಡೆಗಳಿದೆ. ಈಗೇನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಹಕ್ಕು ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಸೊಸೈಟಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಸಾಗಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಆಡಿಗಳಿಂದ ತಂದು ನಾವು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಹಾಮಂಡಲ ಇದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಸ್ಟಾಲ್ಗಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಅದು ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಜೇನು ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೆ ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕರುಳಿನ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಕಾರಣ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅರಣ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗಂಗಾಗಬೇಕು. ಅರಣ್ಯ ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅದು ಉಳಿಬೇಕು, ಅದು ಬೀಜೋತ್ಪನ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅದು ಕಾಪಾಡಬೇಕನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಟ್ರೈಫೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಮೂಲಕ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಪರಿಕರಗಳೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗಡೆ ಇವತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟೇ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಭೀಮ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು. ಮೇಡಮ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಹೋಗೋ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ತಗ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ದಾರರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಇದೊಂದು ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಏನು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಘನೆ ಎಲ್ಲನೂ ಒಳ್ಳೆ ಅವರ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೆಲೆನ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ವಲಸೆ ಹೋಗೋ ಪ್ರಮಾಣನ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇನ ಉದ್ಯೋಗನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಗೋಮಾಳಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನನ್ನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಆದಾಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆನ ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭೀಮ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸೊ ಯು. ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ತರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. We are joined with from Karnataka by Kalakar sir, and sir is telling us about how the forest dependent communities around the area are being helped with the collection of non-timber forest produce. Various species, various produce like berries and fruits, as well as tubers and other roots and medicinal plants are also being regularly collected. And what they have done is they have created a system, a cooperative, which helps them to regularize and channelize these forest collectors and make sure that there is a system that is developed to make sure that this produce is marketed, as well as there is a process to ensure that the forest dwellers receive this benefit from the forests. They have monthly meetings which ensure that all the community members are able to join and discuss about not only the income that they receive from the forests, but also their problems that they face. Like how Fires also described about beekeeping and apiculture, here also they have beehives and they harvest the honey and that is also sold outside.
They have also a state level processing unit, which follows a very scientific method of segregating and collecting all of these produce from the forest, which ensures that there is a clear transparency in the marketing and packaging of all this produce. Also, in consultation with TriFed, they have been able to receive some support, both and which has helped the cooperative to develop quite a bit. And with the introduction of the FRE Act, some of these forest regions have now been able to secure their titles as well, which has helped these communities to increase their support for livelihoods. And most importantly, with the establishment of this cooperative, many of the communities who used to migrate to neighboring towns and neighboring cities have now reduced, and they are now able to collect the forest produce, and through this cooperative society are able to make sure that they have a stable income. So thank you so much, sir. You have shared your story with us. थोड़ी सी हिंदी में मैं आपको समझाना चाहती हूँ यहाँ के ये हमारे साथ कर्नाटका से जुड़े हैं और वो हमारे लिए समझा रहे हैं कि कैसे उन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है जो हर महीने मिलता है, और उनके काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो अरण्य से जो मिलने वाली पदार्थें हैं उनको कैसे अच्छे से कलेक्ट करके मार्केट करने का पूरा एक सिस्टम बनाया है। और उन्होंने स्टेट लेवल में प्रोसेसिंग यूनिट का भी एस्टैब्लिश किया है, जहाँ पे ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो कलेक्ट करके अच्छे से साइंटिफिक प्रोसेसिंग होता है, जिससे उनको अच्छा दाम भी मिलता है और ऑल्सो कम्युनिटीज़ का इनकम बढ़ा है। उन्होंने गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी लिंकेजेस किया है, जैसे ट्राइफेड, जो उनको ये सहायता देती है कि इनका जो सोसाइटी है उनको सपोर्ट करें, और अच्छे तरह से मार्केट लिंकेजेस भी क्रिएट किए हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ जुड़े। हमारे चैट बॉक्स में कुछ सवाल हैं जो हम इसके बाद लेंगे। हम सभी पैनलिस्ट से गुजारिश करते हैं कि आप अपना कैमरा ऑन करिए, सो दैट हम एक छोटा ग्रुप फोटो ले सकते हैं। I request all the panelists to please switch on your camera. Fire, Mr. Fire, if you can please switch on your camera. Yes. Yogeshwar ji, आप प्लीज अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। मैम योगेश लेट बिकॉज ऑफ सम इशू। हाँ जी। इची, आप भी कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा प्लीज। Sital, we can't see you. Thank you so much. We can move to the questions. Chen, will you take a few? Yeah. Thank you everyone for the wonderful presentation and sharing these inspiring stories. We now have a few questions from the participation in the chat box, and we will directly direct them to our presenters. The first question is to Mr. Tefukile from Nagaland. There's a question from Dana. How is tourism at Akile Potato Farm managed? Who collects the money, and to what extent can private individuals from the village participate? We are curious to know more about the mechanism. Pire, can you please take this? Yeah. Okay, thank you for the question. For supplementing your query, actually, as I mentioned, the Akile Potato Farm is a community-owned land, and the community members look after the whole thing. So actually, the community have elected a
we call it youth society. So in the youth society, the team members will comprise of a president, vice president, then secretary, and some 4 or 5 more members to assist in the work. So we call it the youth society. So presently, I'm the president of the youth society. So myself, along with my team, we take care of the ecotourism activities happening at the farm. So regarding the sanitation fee, which we collect for the few years back, we've been collecting a nominal fee of ₹20 per person for sanitation purpose. We have to clean up, we have to maintain the farm, we have to collect the litter and put for incineration, waste incineration, and things like that. So there's a lot of management work to be and sanitation work to be looked after. Yeah, I hope I have replied to your query. Thank you. Thank you. We have another question for you. This is from Manoharji. He asks, what is the ratio of individual and community owned land in your village? How much of it is by private, like individually owned, and how much of it is collectively owned in your village? Okay. The land holdings in our village, it applies to the whole state of Nagaland actually. So the community land holdings, the private land holdings will be a little smaller in patches of small patches of land, whereas the community land holdings will be a bigger portion of land like the forest area, and mainly the forest areas, yes, they belong to the community. And the private land holdings are usually located within the village area. Yes. So the context of why Manohar is asking this question is mainly to understand that with the potato farm being there, uh, uh, is there is this also owned in a private owned land, or does it come under the collectively owned land? Yes, this is a community owned land. Yes, community land. All right, all right. Okay. Thank you, thank you. Chen, we can go to the next question, please. Thank you, Pira, for explaining the process as well as the land holding pattern system in the Nagaland as well as in the village of Kikwema. Krishna Nama. Chen, just a second. मैं उसका धना का क्वेश्चन था उनसे कि उनके गांव में जितना भी टूरिज्म है वो कैसे, जो पैसा उन्होंने इकट्ठा करते हैं वो पैसे के क्या करते हैं और कौन है जो इकट्ठा करते हैं। तो उन्होंने बोला कि उनके गांव में एक समिति है और समिति ने बहुत कम अमाउंट रखा है, 20 रुपए लेते हैं हर जो टूरिस्ट आते हैं उनके फार्म में, और वो पैसा उनके कमेटी में जमा होता है जो कमेटी के मतलब जो गांव के जो फैसिलिटीज के लिए यूज होते हैं। Krishna Namaste. हम लोग क्वेश्चन है, we have a question from Andhra Pradesh from Krishna Nama. Are there any support system from the government or other agencies like forest department or horticulture department that help support your livelihood? Prasanna, will you like to translate that? మాకు రేషన్ కార్డ్ ఏముండదు, బియ్యము 30 కేజీలు ఇస్తారు. మాకు 30 కేజీలు చాలు, మాకు కుటుంబము పెద్దది. అట్లా ఆ కాయలు అమ్ముకోవాలా, దుంగా తెచ్చుకోవాలా. Okay. I'll translate it. So she's saying that yes, they do have a PDS system, ration rice they used to get monthly, but that is not enough to meet the needs of their family. So for that only they are selling Wiki Fruits for the rice. Okay. Thank you for sharing. Thank you for sharing. कृष्णमा जी से सवाल था कि गवर्नमेंट प्रोग्राम से उनको कोई सहायता मिलती है कि नहीं। तो उनके गांव में पीडीएस का सिस्टम है जिससे उनको चावल मिलता है, पर वो चावल उनके परिवारों के लिए काफी नहीं है, इसलिए वो लोग अपने
कॉमन लैंड से बिकी के फ्रूट्स जो बेर है वो कलेक्ट करते हैं और वो कलेक्ट करके ही बेच के उनके लाइवलीहुड आजीविका को सपोर्ट करता है. Yes. Yes, again to Krishnama. With one more question is there. You mentioned an exchange system for rice. Are there any public distribution system like the PTS benefits or other government schemes available to you? ఏవైనా గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయని అడుగుతున్నారు. మాకేం లేవు, మా పిల్లలకు లేవు, మాకు లేవు. అదే జీవనం చేయాల, తినల్లా, అడుగు పిల్లల్ని పోవాల, బిక్కాలు, పులింజకాయలు, ఈతకాయలు, నెల్లికాయలు అవి తెచ్చుకోవాల. మాకు ఆ జీవనమే ఉండేది. బియ్యము నెల కూతురు ఇస్తారు, ఆ బియ్యం చాలా కాబట్టి మా కాయలు అమ్ముకోవాలి. బియ్యానికి కొంతవరకు, డబ్బులు కొంతకు అమ్ముకొని అది పిల్లలకు మాకు జీవనం చేయాలి. So also to add to that is like, is there any support from the forest system, forest department, that they are collecting these non-forest produce? So is that help? Is there any support? Like when they go to collect, are they asked from the forest department not to do it, or is there a system like that where they, is there any challenges? మనకు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏ విధంగా సాయం చేస్తున్నారని చెప్పండి. ఇది కరువు పనులు చేపించేదానికి కాలువలు అంట, బావి గుంటలు అట్లాంటివి ఇస్తారు. ఓకే, అంతేనా? ఇంకేమైనా ఉందా? ఏమైనా సో షీ ఈస్ సేయింగ్ దట్ there is no direct benefit that they got from the forest department, but still they are supporting to make some restoration work in the place that they are getting Vicky fruits in the common lands. Yes, that is the support they are getting from the forest department. And there is ఇంకా ఏమైనా ఉంది? ఏం లేదు, చెట్లు సాక్కోమని చెప్తారు కదా, ఆ చెట్లు సాక్కుంటే మనకు ఉపాయం అని ఆ గుట్టలో కాపాడుకొని ఆ కాయలు తెచ్చుకోవటము, మనం సంపాదించుకొని అట్లా అమ్ముకోవటం. Okay, okay. So she's saying that the forest department, they used to guide them the kind of trees that are growing in the common land that are useful to make their livelihoods better. So that is the kind of awareness they are giving to the villages. That's it. Yeah, तो thank you. उनसे सवाल था कि अरण्य विभाग से उनको कोई सपोर्ट मिलता है कि वो अपने जो बिक्की के जो फल इकट्ठा करते हैं, तो वो बोलते हैं कि अरण्य विभाग ने से डायरेक्ट कोई सपोर्ट तो नहीं मिलता है, पर वो काफी कंजर्वेशन या रेस्टोरेशन काम करते हैं अरण्य में, जिससे उनको और अच्छे से बिकी फ्रूट्स इकट्ठे करने का मौका मिलता है. ऑल्सो जो प्लांटेशंस भी करते हैं, जिससे उनको काफी फायदा होता है. Yeah, thank you, madam. Thank you for clarifying how traditional system and support work together for food security. One more question, like how much time per day they spend time in beekie collection? Okay. వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, ఒక రోజులో ఎన్ని గంటలు మీరు వెళ్ళి పొద్దున్నే 9 గంటలు పోతే 5, రాత్రి మధ్యాహ్నం 1 గంటకు, ఓ రోజు 1 గంటకు వస్తాం, ఓ రోజు 3 గంటలకు అట్లా వచ్చేస్తుంది. దొరికితే 1 గంటకి అట్లా వచ్చేస్తాం పొద్దున్న పోతే. దొరకన్నా పోయినానుకో 3 గంటలు, 2 గంటలు, 2:30 అట్లా అట్లా వచ్చేస్తాం. మధ్యాహ్నం 1 గంటకి అట్లా. ఓకే, పొద్దున్న 9కి పోతే మధ్యాహ్నం ఇట్లా 2 గంటలకు, 1 గంటకి అట్లా వచ్చేస్తాం. She is saying that it depends, it depending on the harvest that they have in the forest. If it is the rainy days, they used to get more. If there is less rainfall, they used to spend around 7 to 8 hours. They used to go for the forest in the morning 9 or 10 o'clock, and they used to come back 1 o'clock or 5 o'clock, depending on the produce that they get from the commons. All right, very important. Is it seasonal? Is it only during some times of the year? Is it all through the year? Ma'am, can you repeat the question? Is the availability of the bicky fruits throughout the year, or is it seasonal? వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, ఎప్పుడెప్పుడు మనకు బిక్కి కాయలు అనేది దొరుకుతుంది, అది ఎప్పుడు, ఏ కాలంలో? ఏ కాలం అంటే సంవత్సరానికి
సంవత్సరానికి ఒక తూరే వచ్చేది. ఓకే. ఎన్ని నెలలు ఒక వస్తాయి? నెల వస్తాయి. ఓకే. సో దే యూస్ టు హార్వెస్ట్ ఒక దిస్ నెల బిగ్ ఫ్రూట్స్ ఒక నెల. once 1 month in a year. That's Okay. it. Okay. Thank you, Prasanna, and thank you, Madam, for answering that. And thank you for giving us an idea of the effort involved in sustainable harvesting. Shilpi, would you like to translate this to in Hindi to our other Sure. people joining us? हाँ जी, तो कृष्णमल जी से पूछ रहे थे कि वो जो बिकी फ्रूट्स कलेक्ट करते हैं साल में कितने दिन को उनको मिलता है, तो वो बता रहे हैं कि 1 महीने में उनको मौका मिलता है अच्छे से उनका साझा करने के लिए, और बोल रहे हैं कि कभी जब बारिश ज़्यादा होती है तो उनको ज़्यादा फल मिलते हैं, नहीं तो उनको 7 से 8 घंटे लगते हैं सारे बिकी फ्रूट्स कलेक्ट करने के लिए। प्रणाली का एक सवाल है, हम प्रणाली से सुनेंगे। मेरा सवाल 7 से 8 घंटे लगते हैं सारे। मेरा सवाल योगेश जी से है। चलिए फिर हम अगले सवाल की तरफ जाएंगे। ये हमारे उड़ीसा टीम के लिए हैं जो जुड़ रहे हैं। शीतल, आप अगर हमें सुन सकते हैं, कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज। शायद उनके नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं। और कोई सवाल है किसी का? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। Chen, would you like to close? Yeah, thank you everyone for joining this afternoon session, and a big thank you to all the presenters, Yogeshwar, Tefukile, Mohan, Alok, Krishnanama, and Karakalkar, sorry if I mispronounce it, for sharing such an inspiring stories from Maharashtra, Nagaland, Orissa, Andhra Pradesh, and Karnataka. Your experience of community-led stewardship, sustainable livelihoods, and conservation truly remind us the power of collective action. I would also like to thank Shilpi for moderating us in this beautiful session, as well as translating us, as well as to all the support team, Santosh, Ichilale, Sital, Prasanna, and Bhima Nekia for making us this session run smoothly, and also to the tech support team. We hope these stories encourages all of us to continue supporting community initiatives, learning from traditional wisdom, and working together to restore and protect our commons. Thank you once again to all the participants for your engagement, questions, and enthusiasm. We look forward to seeing you in the next session at the upcoming events of Community Conference on Commons. With that, we officially close this afternoon session. Wishing you all a wonderful evening ahead. Over to you, Shilpi. Thank you so much, Jen. But we just have received one more question. Okay. Kalakar avre, nimge one question bandide. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್? ಹೇಳಿ. ಈಗ ಮನೋಹರ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ದು ಈಗ ಕಾಡಿಂದ ಸಿಗೋದು ಹನಿ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಹನಿದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು? ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ 450 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಯಾರ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ 350, ಬಟ್ ಹಂಗೆ ರಾ ಇದ್ರೆ ಹೌದು
ನಾವು ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿಗೆ 350 ನಾವು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ರೇಟ್ ಹಾ. ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ದಳ್ಳಾಳಿಗೂ ನಮಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. KG-ಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೇಟಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನೇರ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಹ್ಮ್ ಒಂದು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ತೂಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ. ಹ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ರೇಟ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ amount. हम्म। मनोहर जी, हमारे साथ कलाकार जी जो शेयर कर रहे हैं कि सोसाइटी के थ्रू से जो उनको मिलता है वो जो गवर्नमेंट फिक्स्ड रेट है उसी के प्रकार से उनको देना होता है। और ऐसा, और अगर सोसाइटी को कंपेयर करते हैं दूसरे प्लेयर्स के साथ, तो यूजुअली द मिडल मैन आर द वन हु टेक मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स। बट यहाँ पे जो सोसाइटी है उन्होंने जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्राइसेस है उसी के हिसाब से उनको फॉरेस्ट जो कलेक्टर्स हैं उनको मिलता है। आई होप इट्स आंसर्ड योर क्वेश्चन। ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಮೂರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗಂತ ಒಂದು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮೇಡಮ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂತ ಏನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶುದ್ಧ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿ ಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಾರು ಈ ತರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ Screenshot ಯಾರ್ಯಾರು ಮಲಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅವರು ಏನಾರು ಇದು ನಕಲಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. मैं जस्ट थैंक यू सो मच। इनफैक्ट ये जो फॉरेस्ट का हनी के बारे में, मैं महाराष्ट्र में एक जो प्रोसेसिंग यूनिट में जो एक हमारे साथी संस्था जो उसको प्रोसेसिंग करता है, तो वो मुझे जो बता रहे थे, सो ही कलेक्ट्स the raw honey from the forest from the community at the rate of 150 per kg. And after processing he sells it at the price of 300 to 400. So just I wanted to know the price before I mean of the raw honey and after the processing and bottling. So the whole objective behind this tripod and linking with the market is to enhance the profit to the primary collector. So just I wanted to understand कि जो कितना डिफरेंस है अगर वो लोकल में बेचता है और जब प्रोसेसिंग के बाद कितना प्रॉफिट आता है। थैंक यू। तो वो प्राइस में थोड़ा बता दीजिए। तो ಕಲಾಕಾರ ಜಿ जो आप बोल रहे हैं, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಅದು 350, ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮುಂಚೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ? ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ 350 ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟುಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾವು 450ಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಫೆಡರೇಷನ್ ಲಾಭ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅದು 1 kg ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅರ್ಧ kgಗೆನೆ 1 kgಗೆ ಸರ್? ಅರ್ಧ kgಗೆ 450 प्रोसेस। मनोहर जी वो बोल रहे हैं कि 350 rupees for half a kg before processing, and once it is processed it is sold at 450 rupees. Okay, thank you so much. After the necessary quality check. ಲಾಭ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್। तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस है, जो लोकल कम्युनिटी है उसका जो कोऑपरेटिव है उनको मिलता है हाफ द रेट, और जो फेडरेशन जो स्टेट लेवल पे है उनको भी हाफ द रेट मिलता है। ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ದೇನೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ. ಇದು ಹನಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಹೌದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಲೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ? ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ without interest. They are also providing loans without interest for all the society members. Thank you so much sir. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you very much for all of you for joining us. We will be having a session tomorrow as well. Please join us. धन्यवाद आप सभी का, आपने हमारे साथ जुड़े हैं
और ये कॉन्फ्रेंस कल भी है, तो हमें गुजारिश है कि आप सभी कल भी हमारे साथ जुड़े। कल सुबह 10 बजे से हमारा एक और सेशन है और शाम दोपहर में 2 बजे से हमारा दूसरा सेशन है। और अगर आप नहीं जुड़ पाते हैं तो यूट्यूब पे भी हमारा चैनल चल रहा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। जो हमारे साथ लोकल स्क्रीनिंग से जुड़े हैं उनसे गुजारिश है कि जो चैट बॉक्स में फॉर्म है वो प्लीज भर दीजिए। Those who are joining us from the local screening locations, please fill in the Google form that is put in the chat box. Thank you so much, everybody, and it was our pleasure to host you. Dhanyawad, Guru. Namaskar. Thank you. Thank you, madam. Thank you, sir. With that, we officially close this afternoon session. Wishing you a wonderful evening ahead. Thank you. Thank you. Bye.